मिस्टर राजेश बालचंद्रन जी को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट AGI मिलटेक की ओर से, और वो अपना पहला प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने देंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद में हमें इंतज़ार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में होंगे। सो हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं श्री राजेश बालचंद्रन जी को फॉर हिज प्रेजेंटेशन, एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं सर आएँ और अपना प्रेजेंटेशन दें। हाय सर। Audio check. Yes. Hello. 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 Good morning. May I request people who are standing to please take your seats so that it will be it'll be audible to all. Am I echoing or is it audible? Thank you. Let me introduce myself. I am Rajesh Balchandran. I am the Executive Vice President for AGI Miltech. Before I start my presentation, let me congratulate IIRS and thank you Mukesh Jain ji and the entire team for giving this opportunity to make a presentation to this wonderful audience on how AGI Miltech can add value to the exporters. So yesterday's discussion was on sellers, buyers, and in between the traders, how there is a surplus rice stock and what is required to do better exports, make margins in exports. There was a discussion on indexing of pricing, how the price trends are, and things like that. The best part about yesterday's presentation was some of the panelists, they very clearly told that it's not about volume alone. We saw in one of the presentation, Thai rice is commanding some premium when compared to a lot of other markets. Pakistan rice is commanding some premium. Now, our job as AGI Miltech, we are suppliers of the world's food infrastructure. Our job is to ensure that we add value to the millers so that they can make good margins in exporting rice to other countries. And my presentation is going to be on how we can add that value to that rice. There is a lot of discussions going around very low margin, pricing being at a low level, profitability being affected. My job is to ensure that all the exporters, traders make money in this business. And how do we do that is what is going to come out in the presentation. First, let me talk about what AGI globally is. Slide changer. So as I told, we are the world's food infrastructure solution provider. And our job is to advance solutions right from storage to processing in all the segments related to farm to plate. The entire value chain with respect to providing storage and processing solutions from farm to plate
AGI Miltech provides the entire solution for that. Just before getting into that, what AGI is? AGI is a Canadian, $1.6 billion Canadian multinational. We are present all over the world, and we provide solutions, infrastructure solutions from farm to all commercial applications. Farm applications where there are large farms which need storage, portable handling of movement of grains from the farm to a storage area, we provide the entire infrastructure. That's in the farm application. Now coming to commercial applications which are land-based, where there are permanent handling required, we provide entire solutions from storage to processing for such application. So be it farm or commercial applications, AGI Miltech provides the entire infrastructure solutions. Our global operations, we are pretty much present all over the world. Look at various continents, US, Canada, then coming to European continent, we are present in Italy. In Asia, we have manufacturing plants in India. So thereby, we cover the entire global landscape, and we can provide all machines and solutions for storage to processing in all these continents. We have 27 manufacturing facilities with 22 brands, and we operate in 95 countries. So what is the purpose of, we have a very strong purpose. And our purpose is basically to eliminate food loss and prevent hunger. That's the purpose we strongly believe in, and that's what drives our company in providing these solutions. As I told you, our mission is to advance storage, handling, and processing solutions across the entire food value chain, and that's our mission. This mission is well aligned with the purpose of eliminating food loss and hunger, and I'll tell you how we do that. So, as a responsible company present globally, we have a very strong purpose around ESG and sustainability. As I told you, we have solutions for storage, and storage means what? By providing scientific storage around equipments like silos, where all kind of food grains can be stored, we reduce damage to the food grain from infestation, from rodent attack, and prevent a loss of almost 10% of food grain loss. This 10% translates into 6.5 million ton of food grain loss globally. Our storage solutions prevent 6.5 million ton of food grain loss globally, and this can actually feed 30 million people. Just imagine the food loss of 6.5 million ton can provide food to 30 million people globally. There are so many countries where there is still malnutrition, starvation, and we as a company, as a responsible company with a purpose of preventing food loss and hunger, the loss that we prevent can feed 30 million people. And the storage systems that we are talking about that stores grain and conveys grain gives a life of 30 years. So we have a purpose, we have a complete solution around aligning with the purpose and mission. So this was about AGI globally, our presence globally in almost all continents which you saw in the map. Our headquarters are in Canada. It's a Canadian-based multinational. Having said that, for all the exporters in India, they would like to know, and they pretty much know what AGI Miltech is in India.
AGM Miltech in India, we have 5 manufacturing facilities in south of India, which is in a state called Karnataka, and it is in Bangalore. We have come out with a 6th manufacturing facility in the outskirts bordering Karnataka and Tamil Nadu, which is in a place called Hosur, which is a 57-acre land where in future we plan to consolidate all these manufacturing operations and move to a single unit. So that is why we've acquired a land of 57 acres where we can do end-to-end production right from storage to processing in one location. Currently, our 5 units that we have, I'll just talk about Unit 1 and Unit 2. Unit 1 and Unit 2, Unit 2, let me start with, we manufacture components for grain processing, be it rice processing, paddy processing, pulse processing. All the components for those machines are produced in Unit 2. We bring it to Unit 1 and we assemble the machine there. So all the processing machines are in Unit 1. If any of you all come to Bangalore, please get in touch with me. We would be really happy to show our plants. And you can, as they say, seeing is believing. You can see the infrastructure that we have in India that can actually cater to almost all the milling customers in India. That's the size of infrastructure that we have. Coming to Unit 3, we have our manufacturing of grain discharges. We call that elevators. And we have recently started manufacturing automation and control, which is going to be the next big thing. They're talking about automation, control, artificial intelligence in future. We are already preparing for that. We've already put up a manufacturing for automation and control, color sorter solutions in Unit 3. Unit 4 is a very large unit where we manufacture silos, scientific silos for food grain storage. And we also have conveying solutions there, material handling solutions, parboiling systems. There's one more unit called Unit 5, which is not shown here, but that unit is basically a manufacturing hub for portables, which are portable conveying systems. And that is a manufacturing hub for global portable solutions. We also can manufacture those portables for Indian applications. But we started off with global because there are large farms in Australia, Canada, where we can supply portables from that unit. So in a nutshell, what do we do? AGI Miltech is a one-stop end-to-end solution provider in the globe. Today, there is no company in the globe who can provide one-stop end-to-end solution for all your food infrastructure needs. Right from storage silos to processing, which is milling, which most of the millers are aware of, to color sorting, packing, and loading into the truck. The entire solution can be done by us. So our positioning is we are one-stop solution for all storage and processing solutions. Before we process food grains, there is also applications like parboiling, drying, and we have parboiling, drying solutions for these applications. What is our mantra? As I told you, our mantra is to reduce food grain loss, which is our purpose. So how do we do that? In our processing solutions, we confirm that we can increase the yield by 1%. Increasing yield by 1% means either saving it by loss of brokens, we reduce brokens, we increase yield by 1%, which is a huge margin for the millers. And in future, we will be driving, we have already started on automation solutions. We'll be driving AI around that because AI needs data. We all understand that artificial intelligence is a big thing today being spoken about. But to drive that, you need a lot of data. And that data is what is going to flow from automation, where you can store it in cloud and use that data mining to drive intelligence
in future. So our endeavor is to move towards those solutions. Now, today's topic is about advancements in technology in storage and processing. As I told you, we are a global leader in storage silos. We have the highest market leadership. In India, we have put up a dedicated manufacturing line for silos, and we use a very high quality material called POSMAC 3.0, which is a galvanized steel. You need galvanization to provide the material from getting rusted, from corrosion. So that is why we use a very high-end galvanized steel, which is a composite alloy called POSMAC 3.0. We meet all the global standards, which is very important for exporters. We meet SI standard, EU standards, and ANSI standards. So anywhere in the world, if somebody talks about food compatibility, FDA approvals, our standards meet that. Then you have silos to store food grains, but you also need conveying elements to convey food grain from the land to the silo. So we make all those bulk grain conveyors. In commercial applications, they are all stationary, permanent handling. In farms, it is portable handling, because in farms you will have small silos in different locations. So you need a portable conveyor to move food grains from one silo to another silo. So that is where we manufacture these portable conveyors. The capacities are very high. The conveying capacity is 300 tons per hour in permanent silo and 270 tons per hour in portable silos. Next, coming to exporters, you all know that almost 65 to 70% of the rice that is exported globally is parboiled rice. There is a huge demand for boiled rice, and we have a fully automated parboil system with online cooker where we can save water, we can improve the yield by 1%. We have a complete technology around fully automated parboil system with auto water recirculation and water recycling system. These are sustainable solutions because we are talking about saving water. Today, saving water is a huge thing for any industry, and we provide water recycling system that can save water. And also the final output of paddy that comes, the rice that comes, we can improve the yield by 1%. That's where we bring sustainability in the solutions. Next is grain processing solutions. We have machines that can process grain, process paddy, produce rice from 2 to 20 tons per hour. That's the level of capacity we have. We are enabling them with automation, IoT, and in future we will have AI enabled. I think when the industry matures and gets to that level, you will find AI enabled solutions from us. Then coming to color sorting machines, all our color sorting machines are AI enabled. They can do color and size sorting. So, and there are high-end color sorters which can remove all foreign materials from the rice, which is very much important for exporters, because exporters, if they find, export customers, if they find any impurity, they can reject the rice. So we have color sorters which can actually remove all kind of foreign materials. Next most important point, yesterday in the panel discussion, people were talking about how can we add value to the rice that is exported. Okay. Today, you have hybrid variety of rice. The seeds that are coming are of hybrid variety. The fertility of soil is in question because there's a lot of fertilizers which are required, pesticides which are required to improve the yield. By doing this, what is happening is the nutritional value of rice after milling, you will see that there is a lot of polishing which being done. You have whiteners which will remove the bran, then there is silky polisher which will polish the rice. There is a lot of nutritional value which is lost. So in the panel discussion yesterday, somebody was talking about if we fortify the rice by adding nutritional value like zinc, folic acid, minerals to the rice, you can actually gain a value in the export market.
So we have a fully automated fortified rice kernel manufacturing machine which can actually manufacture fortified rice. Fortified rice are inbuilt with the required nutritional values like zinc, folic acid, iron, that is mixed in 1% or 2% depending on what the markets are. They say in Japan it is about 4%. In India, FCI has come out with a norm that to prevent malnutrition in students, kids who are studying in schools, mandatory 1% of FRK rice has to be mixed in normal rice to provide nutritional value. And we manufacture these machines which are, we are the only BIS approved fully automated FRK manufacturer in India. And there are a lot of people today, FCI is mandating BIS approval for FRK manufacturing. You would see that there are a lot of machines which have come from China and other places which are not meeting the BIS standards. FCI has mandated that the machines have to meet BIS standards. Only then those FRK kernels are approved in the FCI market. I'm sure the exporters, they have a much higher demand, a much higher regulation on FRK standards. And our machines fulfill those quantities, and the value that you can get on your export rice comes from these FRK kernels. It's meeting a very stringent standard called BIS 17853, and it's a fully automated project, so you don't need people. You just have to put broken rice in a pin mill, it gets crushed into powder, it gets mixed with water and all the essential minerals, forms the dough, gets extruded, the kernels come out of the extruder with certain high moisture content, it goes through the dryers, dried, and then the final kernel that is coming out is cooled, and you will see that the quality of the kernel that comes is excellent, is outstanding, which can be mixed in the rice for the export market. Now, post-COVID, there was a lot of requirement from exporters that they depend less on labors because manual intervention is creating a lot of issues with FDA because there is hygiene issues which is coming in the export market, contamination issues which are coming. So AGI has got both plant automation in place, machine automation in place. All this automation is towards delivering. The bottom line is profitability to millers. How do we deliver that? We improve the yield. We improve accuracy, consistency. All this available on an HMI dashboard screen. You can see what is the productivity, availability of the rice. Overall equipment efficiency, OEE, can be seen in the, on the dashboards. Compliance and audit. See, when you have all these on a dashboard which is controlled by automation, it is very simple to show those reports to your buyers and see how we comply with all the standards. So we have developed all the automation needs for that. This also ensures that there is a lot of energy consumption reduction, which can all be seen on the dashboard. Thank you. With that, I end my presentation. I think I've taken 25 minutes. But just to summarize on what is the need of the hour in a challenging environment that is happening around prices at a lower level in the export market, you can bank on a company which is AGI Miltech to ensure that we will add value to the rice that you supply to the export market and gain a premium on the rice prices, which is going to help the which will actually ensure that there is profitability to all the players in the value chain, be it buyers, sellers, and the traders. And that is our motto. The motto is to add value to the rice being supplied in the export market. And the solutions that we have, I've already explained. And that's our single mantra for all the
customers. Thank you very much. Thank you so much, Rajesh sir. And it was a good session and you have given a nice input about the industry. और अब आपको फेलिसिटेट करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजेश पहारिया जैन जी को। श्री राजेश पहारिया जैन जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मंच पर आएँ और श्री राजेश बालचंद्रन जी को आप सम्मानित करेंगे। जो भी डेलीगेट्स हमारे बीच आए हुए हैं उन्हें हम मेमेंटो के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क पूरे देश में और विश्व में इट इज़ वेरी फेमस, द कोसा टसर सिल्क ऑफ छत्तीसगढ़, और साथ ही जो रॉट आयरन एंड बेल मेटल का हमारा जो बस्तर ट्राइबल आर्ट है उसकी प्रति भेंट करते हुए। थैंक यू सो मच सर। अपने सभी गेस्ट जो इस सेशन के बीच में भी आए हैं उन सब का वेलकम करते हैं और अब बस कुछ मिनटों की तैयारी है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधार रहे हैं और उसके लिए हमारी तैयारी हो रही है। कुछ ही देर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यहाँ पर आगमन होगा और एक इम्पॉर्टेंट सेशन उनके बीच में हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय मंत्री हमारे बीच होंगे। वी स्टार्टेड दिस 2 days इवेंट yesterday और वहाँ पर हमें बहुत खुशी है कि इनॉग्रल सेशन में ऑनरेबल मिनिस्टर ओपी चौधरी जी हमारे बीच थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर के, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के ही हैज़ गिवन अ विजन कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। और इसी सिलसिले में आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी कुछ ही देर में हमारे बीच होने वाले हैं। अभिषेक देव जी भी हमारे बीच आए हुए हैं, फॉरेन डेलीगेट्स हैं एंड फॉर द लास्ट 2 days लगातार यहाँ पर बातचीत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हो रही है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में ये IIRS स्टैब्लिश हो रहा है अपने 2nd एडिशन में आते हुए, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऑर्गेनाइज होने वाला एक इंटरनेशनल समिट है और जो कि प्लेटफॉर्म बन रहा है इस इंडस्ट्री के लिए एक ब्रिज के रूप में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में या कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के बीच में। तो एक एंटायरली इकोसिस्टम कैसे डेवलप होगा और कैसे हम और इससे बेहतर आगे बढ़ सकते हैं, इन सबको देखने समझने का एक शानदार मौका है। हम आप सबसे ये भी कहेंगे कि जो एग्जीबिशन एरिया है उसका भी आप आनंद ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी जो सेशन है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन होगा, इसलिए आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें और अपने अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लें। हेलो माइक चेक।
which most of the millers are aware of. The entire
बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिसर में आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वे हमारे बीच यहाँ उपस्थित होंगे। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करना प्रारंभ करें और आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन इस परिसर पर होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस IIRS का आज दूसरा दिन है और हमें बहुत खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से और साथ ही विदेश से भी हमारे बीच में प्रतिनिधि आए हुए हैं। सो वी वेलकम यू ऑल। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर लगातार बातचीत हो रही है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के उपरांत कुछ ऐसी निर्णायक आउटकम्स निकालने की कोशिश है जिससे कि ऐसे आयोजन की सार्थकता और बढ़ सके। छत्तीसगढ़ राज्य अपने धान उत्पादन के लिए, पैडी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और ऐसे राज्य में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट को ऑर्गेनाइज़ करना और इतने बड़े स्केल पर इसे ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब संभव हो पाया है आप सभी के सहयोग से, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके सहयोग से और एसोसिएशन के सभी मेंबर्स के प्रयास से, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से और साथ ही भारत सरकार के सहयोग से ये इतना बड़ा आयोजन और उसका इस साल जो कि दूसरा एपिसोड है, दूसरा एडिशन है और वो अपने आप में बहुत बड़ा है। पिछले साल के मुकाबले अब यह आयोजन और ज़्यादा बड़े स्तर पर आ चुका है। आज दूसरा दिवस है और अब से कुछ ही क्षणों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली टेक योर सीट सो दैट वी कैन गो अहेड फॉर द सेशन। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्यगण, द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के मेंबर्स हमारे बीच होंगे और साथ ही सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण। एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी ऑन दिस सेकेंड एपिसोड। वी हैव मोर फॉरेन डेलीगेट्स एंड दे हैव अपना वक्त निकाल करके दे केम अक्रॉस एंड दे हैव शेयर्ड देयर विजन अबाउट द इवेंट एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ ब्रिज बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एक ओवरऑल ग्रोथ तभी होती है जब हम सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास करते हैं और सब मिलकर के एक सामूहिक रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत से गेस्ट आ रहे हैं। दे आर स्टिल हमारे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में वो आसपास खड़े हुए हैं। इन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली टेक योर सीट, हम ताकि आने वाले प्रोग्राम को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसका संचालन कर सकें। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।
हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो
और हमें आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस परिसर पर हो चुका है। यहाँ आते ही सबसे पहले वे जो एग्ज़िबिशन एरिया है, उस एग्ज़िबिशन एरिया में वो विज़िट कर रहे हैं, वहाँ का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के इस आयोजन के सभागार में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होंगे। All the eminent guests, foreign delegates and important dignitaries, we welcome you all. बहुत खुशी का अवसर है जब 2 दिनों तक चले इस IIRS के आज सेकेंड डे में हम सब पहुंच चुके हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पैनल डिस्कशन और स्पीकर्स हमारे बीच हैं जिनको सुनना और उन सब्जेक्ट्स पर उनकी बातों को समझने में इस कॉन्फ्रेंस में हमें न सिर्फ हमारा नॉलेज एनहेंस हो रहा है बल्कि इस इंडस्ट्री को एक जो एक्सपोजर मिलना चाहिए और एक ब्रिज की तरह इस इवेंट को काम करना चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी दैट अपने उस उद्देश्य की ओर ऐसे आयोजन सफल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी इस आयोजन में हमारे बीच शामिल होने के लिए पधार चुके हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपना वक्त निकाला है। एग्जीबिशन एरिया में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं हमारे स्टेक होल्डर्स के, उन सभी का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में हमारे बीच इस मुख्य मंच पर उपस्थित होंगे। उनके आगमन के साथ ही अतिथियों का स्वागत और उसके बाद उद्बोधन का अवसर होगा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम उन्हें यहाँ पर अपने इस आयोजन में सुन पाएंगे। उनका उद्बोधन सुनना हम सबके लिए, उनका उद्बोधन प्रेरक होता है और उसके बाद आज जो कि जिस तरीके से पूरे आयोजन की रूपरेखा तय की गई है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मतलब जो मिनट टू मिनट तैयार किए गए हैं वो उसके हिसाब से हम आज के इस प्रोग्राम को संचालित करेंगे जिसमें कि बहुत सारे विषयों पर फिर से पैनल डिस्कशन है और बातचीत है। एसोसिएशंस के मेंबर्स जो वेलकम के दौरान रहने वाले हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप मंच के आसपास रहें ताकि अतिथियों के आगमन पर हम उनका स्वागत कर सकें और आप सभी वहाँ पर नज़दीक ही रहें। साथ ही हम अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे गेस्ट हमारे जो आए हुए हैं वो सभी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया टेक योर सीट्स ताकि हम आज के इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। बहुत से गेस्ट हम देख सकते हैं कि वो अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे लिए बहुत खुशी का यह अवसर है जब 2 दिनों तक चले इस IIRS इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का आज दूसरा दिन है और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अब स्वागत करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच पधार चुके हैं और साथ ही हमें बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे बीच हैं। आदरणीय श्री राम गर्ग जी आप मंच पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम मुकेश जैन जी को आमंत्रित करते हैं, कृपया आप मंच पर आएँ। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री राम गर्ग जी, मुकेश जैन जी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अभिषेक देव जी अपीडा चेयरमैन, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया आप आएँ और आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुकेश जी से भी निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। सुबोध सिंह सर हमारे बीच हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं सुबोध सिंह सर से कि कृपया आप आएँ एंड काइंडली टेक योर सीट ऑन द स्टेज सर प्लीज़। धन्यवाद। सभी अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट ये 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में हमें बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उन्होंने अपना समय निकाला, हमारे बीच पधारे हुए हैं और सर्वप्रथम हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश जैन जी को, साथ ही श्री उमेश जैन जी से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय मंत्री जी हमारे बीच हैं। मयूर जैन जी को हम आमंत्रित करते हैं। आप माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करें। श्री मयूर जैन जी। श्री मयूर जैन जी से निवेदन, माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आप स्वागत करें। हम आशु अग्रवाल जी को आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि श्री राम गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उनका स्वागत करें। श्री आशु अग्रवाल जी। श्री अनिल अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि श्री अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा IIRS, आप हमारे बीच हैं। अनिल अग्रवाल जी से निवेदन, आप श्री अभिषेक सर का स्वागत करें। अमित अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि श्री सुबोध सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अमित अग्रवाल जी से निवेदन कि आप श्री सुबोध सिंह जी का स्वागत करें। राजेश अग्रवाल जी को हम आदर्श अग्रवाल जी से हम आग्रह करते हैं आप आएं और श्री मुकेश जैन जी का आप स्वागत करेंगे। आदर्श अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट है कि आप मुकेश जैन जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और मंचस्थ सम्मानीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास के लिए अग्रसर हैं और नई इंडस्ट्री पॉलिसी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी उतने ही सजग और आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आज के इस आयोजन में आगे बढ़ते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री अभिषेक देव जी को कि अपीडा चेयरमैन सर आप आएँ और आप अपना उद्बोधन दें। श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय मंत्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल एजुकेशन छत्तीसगढ़, श्री सुबोध सिंह जी, श्री राम गर्ग जी, श्री मुकेश जैन जी और जो भी आज हमारे दूसरी कंट्री से डिग्निटरीज आए हैं, एक्सपोर्टर, हमारे FPOs, स्टेक होल्डर्स, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस हमारे इंडियन राइस समिट में आप आए। उन्होंने हमारे जितने भी राइस के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपने हौसला अफजाई करी
ट्रिया छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा काम कर रही है हमारे जो चावल के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। काफ़ी हम लोगों ने इनमें काम करा है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स 2 हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं। कोस्टा रिका में एक्सपोर्ट करा है हमने, और हमने पपुआ न्यू गिनी में एक्सपोर्ट करा है। और अभी हम 15 और देश देख रहे हैं जहाँ पर हम फोर्टिफाइड राइस कर्नल का एक्सपोर्ट करें। हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और जैसा पिछले साल जो हमारी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ अपीडा का ऑफिस होना चाहिए, तो अपीडा का ऑफिस खुल गया है। आज आपके शुभ हाथों से उसका भी हम लोग लोकार्पण करेंगे। और हालांकि ऑफिस का लोकार्पण आज हो रहा है, लेकिन करीब 2 हफ्ते से हमारे यहाँ पर अफसर तैनात हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। तो आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में जो काम होना है, हम लोग काफ़ी उसको आगे बढ़ावा देंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर। चावल और बाकी जो छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा उसके अंदर स्कोप है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल भारत जो विश्व के 2 सबसे बड़े ट्रेड फेयर हैं, गल्फ फूड और बायोफैक, दोनों में हम लोग पार्टनर कंट्री हैं। और मेरा बहुत अच्छा बताते हुए हो रहा है कि हमारी ट्रिया छत्तीसगढ़ है, स्पॉन्ज है, और भी स्टेक होल्डर हैं गल्फ फूड में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के उसमें वो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं। बायोफैक भी है। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, जो हमारा छत्तीसगढ़ के ट्राइबल प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा है, हनी का है, और भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी भी बहुत संभावना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बायोफैक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फेयर है, उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेशन छत्तीसगढ़ की तरफ से होगा। हमने अभी कुछ ही दिन पहले हमारा जो ऑर्गेनिक का जो रेगुलेशन है NPOP, उसमें भी हमने तब्दीली लाई है। और उसमें जो नया एक फ़ीचर है कि जो PGS के जो किसान हैं, उनको हम लोग NPOP में कन्वर्जन करने के लिए हमने एक नई फैसिलिटी लाए हैं। तो जैसे दंतेवाड़ा में हमने देखा बहुत अच्छा PGS के कई किसान हैं, उनको हम लोग NPOP में उनको कन्वर्जन कर सकते हैं जल्दी। तो हम लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे PGS में उसको कन्वर्जन हो पाए। बाकी जितना भी हम लोग चावल के एक्सपोर्ट के लिए छत्तीसगढ़, क्योंकि एक मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, 5वें नंबर में प्रोडक्शन है, और इस साल हमारा रिकॉर्ड चावल का प्रोडक्शन भी हुआ है। तो काफ़ी आयाम ढूंढे जा रहे हैं चावल के एक्सपोर्ट के लिए। तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके काम करेंगे, अपीडा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कि कैसे हमारे जो चावल के एक्सपोर्ट हैं उनको बढ़ाया जाए। कल ही हमने IIRS के साथ भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर, जो प्रोजेक्ट का जो हमने कल्मिनेशन कराया है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे चावल के, उनका भी कल लोकार्पण करा गया। और आगे भी अगर कुछ छत्तीसगढ़ के जो लोकल राइस वैरायटी से कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेवलप करे जा सकते हैं, उन पे भी हम लोग काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों से मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरा अपीडा का सहयोग हमारे साथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें बहुत ही अच्छी जगह भी दी है, जहां पर हमने अपना मंडी परिषद में हमने अपना ऑफिस खोला है। तो आगे पूरी उम्मीद है कि और भी अच्छा यहाँ से छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट होगा। जो भी हमारे किसान हैं, जो भी एग्री सेक्टर से स्टेक होल्डर है, उनको एक्सपोर्ट में इकोसिस्टम में जुड़ने से उनकी अच्छी आमदनी बढ़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक सर। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपीडा ने छत्तीसगढ़ से यहाँ के जो एग्रीकल्चरल निर्यात हैं उसे बढ़ावा देने के लिए और उसे बहुत क्लोजली वॉच करने के लिए उन्होंने अपना एक रीजनल ऑफिस यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसके उद्घाटन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर वो उसका उद्घाटन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। मंचस्थ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही दर्शक दीर्घा में भी प्रदेश के राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय कांतिलाल जी भी, हम सबका अभिनंदन करते हैं। और अब अवसर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का, उनके उद्बोधन का। पूरे सम्मान के साथ और तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन और अभिनंदन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रायपुर की इस पावन भूमि में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का एक दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ है। और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी, प्रमुख सचिव श्री सुमोद कुमार सिंह जी, अपिडा के चेयरमैन श्री अभिषेक देव जी, श्री मुकेश जैन जी, और इस समिट में उपस्थित सभी एक्सपोर्टर्स। और मुझे जानकारी मिली है कि 6 देशों के एम्बेसी के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं और 12 देशों के बायर्स भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में। और मीडिया के मित्रों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कांतिलाल जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये दूसरा संस्करण का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि जब दूसरा समिट का आयोजन हुआ है तो पिछले समय से इसकी भव्यता बढ़ी है। विदेशों से भी हमारे बायर और हमारे एम्बेसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स राइस के वो भी ज़्यादा संख्या में हैं। तो मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और पिछले समिट में हमने आग्रह किया था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपिडा का एक रीजनल ऑफिस खुलना चाहिए और आज वो सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके लिए मैं अपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं उनको देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इससे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट में सहयोग होगा। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और वास्तव में हमारे पुरखों ने बड़ा सोच समझकर इसका नाम धान का कटोरा रखा है। मैं समझता हूं धान की जितनी प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में है उतना शायद कहीं भी नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों प्रजाति हैं धान के, ऐसी ऐसी प्रजाति हैं कि धान अगर पकते रहता है खेत में और आप मेड़ से गुजरेंगे तो उसकी महक आपको मिलेगी। और ऐसे ऐसे चावल हैं, ऐसे ऐसे राइस हैं कि घर में अगर पक रहा होगा तो आप घर के बगल से गुजरेंगे तो चावल की महक आएगी। ऐसे हजारों किस्म के चावल हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए
ये धान का कटोरा जो कहा जाता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर अनेकों स्टॉल लगे हैं, हम लोगों ने कई स्टॉल देखे हैं, कई तरह के प्रजाति के यहाँ पर चावल रखे गए हैं। लेकिन और अगर आप नीचे जाएंगे, देहात में जाएंगे, तो और भी इससे भी बारीक और ज़्यादा खुशबूदार चावल आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम सरगुजा से आते हैं तो वहाँ का जीरा फूल जिसका जीआई टैग हुआ है वो भी खुशबूदार है। यहाँ का दुबराज वो भी खुशबूदार है, वो भी बड़ा फेमस है। और आज के समय में हमको लगता है कि ऑर्गेनिक चावल की ज़्यादा डिमांड है। और दंतेवाड़ा का भी एक स्टॉल लगा है। हमारे दंतेवाड़ा जिला में ऑर्गेनिक सेक्टर में काफ़ी प्रगति हो रही है, काफ़ी बड़े तादाद में वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो हम लोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है अपने प्रदेश में। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं, इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, आज 90 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और करीब 1 लाख मीट्रिक टन चावल ही हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है और मेरा आग्रह होगा, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, जो भी आवश्यक सहयोग होगा सरकार करने के लिए तैयार है। और हम लोग पिछले साल 1,49,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे और इस साल भी धान खरीदी अभी प्रारंभ है और हमको लगता है कि उससे कम नहीं होगा। तो लगातार हम लोग किसानों को फायदा दे रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। तो किसानों को लगातार सरकार सहयोग कर रही है। तो धान के प्रोडक्शन में लगातार यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ज़्यादा विदेशों को चावल का एक्सपोर्ट हो। इसके लिए हमारे सभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे हमारा आग्रह होगा। और आज जिस तरह से हम लोग मंडी शुल्क 0% रखे थे चावल के एक्सपोर्ट में, जिसकी अवधि अभी दिसंबर में समाप्त हो गई है और फिर एसोसिएशन से मांग आया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं आगामी 1 साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% होगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट हमारे छत्तीसगढ़ से राइस के एक्सपोर्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा और 2 दिन का ये समिट निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। मैं आयोजन समिति का फिर से एक बार आभार करते हुए कि आप लोग हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और यही संवेदनशीलता और दूरदर्शिता है हमारे मुखिया की कि प्रदेश के उत्तरोत्तर तरक्की के लिए उन्हें ये बखूबी मालूम है कि हर एक सेक्टर को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। और जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तो प्रदेश में रोज़गार के अवसर, निवेश के अवसर और राज्य के जीडीपी में ग्रोथ का अवसर आता है। हम एक बार पुनः ज़ोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उद्गार और उद्बोधन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। हम मुकेश जैन जी और मयूर जैन जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जैन जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
आशु अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री राम गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आशु अग्रवाल जी। आशु अग्रवाल जी से निवेदन है, माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को आप स्मृति चिन्ह, अच्छा हो गया, श्री राम गर्ग जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अमित अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं और श्री अभिषेक जी हमारे बीच हैं। आप चेयरमैन अपीडा, आप अभिषेक सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अमित जी से निवेदन है। सुबोध सर हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उमेश जैन जी से निवेदन करते हैं कि आप आदरणीय श्री सुबोध सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ की पहचान को सभी को स्मृति चिन्ह में रखने की कोशिश की है और 2 मेमेंटो तैयार किए गए हैं, एक बेल मेटल से और एक रॉट आयरन से। अतिथियों को हम चाहेंगे कि रॉट आयरन के स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए जाएं। कैसे छत्तीसगढ़ की कला सभी हमारे अतिथियों तक जाए, उसके प्रयास लगातार किए गए हैं। और अब हम आभार व्यक्त करने के लिए मुकेश जैन जी से निवेदन करते हैं कि आप आएँ और सभी सम्मानीय अतिथियों के प्रति आप आभार व्यक्त करें। मैं मंच में बैठे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री राम गर्ग जी एवं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम श्री सुबोध सिंह जी एवं चेयरमैन अपेडा और विदेश से आए हुए सभी एम्बेसडर्स का और बाकी माननीय स्टेक होल्डर्स और अतिथिगण सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। आप लोग प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसलिए धन्यवाद और करना चाहता हूं कि 0% मंडी टैक्स जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, किसान को सशक्त बनाना है और छत्तीसगढ़ से निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। इसलिए मैं माननीय अभिषेक देव जी श्री अपीडा चेयरमैन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो सके उसको हम यहाँ पर व्यापारियों को लाभ दें और आपने ऑफिस खोला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे राइस मिलर साथी श्री कांतिलाल जी, श्री विष्णु बिंदल जी, श्री विजय भाई और अन्य साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत साथ रहा। और माननीय श्री संजय जैन जी चेयरमैन CII का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको लोगो सपोर्ट दिया और फिक्की का जो लोगो सपोर्ट मिला और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी लोगो सपोर्ट मिला। माननीय पीयूष गोयल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार है और तथा TPCI ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद है और एरिया जो कि हमारे बासमती राइस मिल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन, उनका भी हमको सपोर्ट मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये बताएंगे कि फॉरेन डेलीगेट्स जो हमारे बीच एम्बेसी से आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ उनका हो सके, तो मंच के आगे हम निवेदन करेंगे कि सभी सम्मानीय अतिथियों का, या हम अपने सम्मानीय अतिथियों को उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं जो एम्बेसी से एम्बेसडर्स एंड हेड ऑफ मिशन हमारे बीच आए हुए हैं। वी रिक्वेस्ट ऑल द फॉरेन डिग्निटरीज कि please do come on the stage and we want to have a group photograph with you. It is a great honor for us to welcome you all in Chhattisgarh, in IIRS, and we are very happy to have you on the stage. सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक औपचारिक उनके बीच में परिचय हो रहा है।
एक बहुत ही खूबसूरत और ये शानदार अवसर है। एक बार ज़ोरदार तालियां इस अवसर को हमेशा हमारी स्मृतियों में हम जिंदा रखेंगे। छत्तीसगढ़ और वैश्विक ग्लोबल का एक साथ मिलन हम देख सकते हैं और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमारे लिए समय निकाला। वे यहाँ पर पधारे हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान हो रहा है। एक बार जोरदार हम तालियों के साथ आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, आदरणीय राम गर्ग जी और सभी सम्मानीय अतिथियों का। अब कुछ समय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं और हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे।
check. Hey, check.
इसके एक्सपोर्ट एक मील का पत्थर साबित होगा और विदेशी मेहमानों का हम छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हैं। और पिछले समिट में अपीडा का एक रीजनल ऑफिस खोलने का आग्रह हमने किया था अपीडा से, तो आज अपीडा के चेयरमैन भी आए हैं और आज रीजनल ऑफिस का शुभारंभ किए हैं। तो इसके लिए मैं अपीडा को धन्यवाद देता हूं और इससे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट में लाभ होगा। आपने मंडी शुल्क भी समाप्त किया है? हाँ, मंडी शुल्क पिछले साल 0% था, जिसकी अवधि दिसंबर में समाप्त हो गई है। फिर एक्सपोर्टरों की तरफ से निवेदन था तो एक साल के लिए फिर मंडी शुल्क 0% कर दिए। किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले जयपुर वाले में नहीं, उनका तो समय आया था 5 साल आया था ना। अब हम लोग का समय है और हम लोग कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो विधायक जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो पहले विधायक बनने के पहले सहकारी बैंक में काम करते थे। उन्होंने दूसरों के नाम से फर्जी लोन लिया है जो प्रमाणित है और पहले कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन कल उनका जमानत खारिज हो गया है और वो मतलब जेल गए। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। हेलो 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 हेलो
चलिए अब हम आगे सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि प्री फंक्शन एरिया में बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट एंड डेलीगेट्स हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर आप सभी सभागार में आएँ और अगला जो सत्र होने वाला है और उसके लिए हम इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स आप सभी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप कृपया मंच पर आएँ। मिस्टर रामकृष्णन एम, आप इस सत्र को मॉडरेट करने वाले हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही एस ज्ञान संबंधन जी, जॉइंट डायरेक्टर, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया यहाँ पर मंच पर पधारें। अनुपम कौशिक जी, हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया जो अगला सेशन शुरू हो रहा है उनके जो पैनलिस्ट हैं उन तक ये सूचना हम पहुंचाएं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मिस्टर अनुपम कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEL, कॉनकोर की ओर से JB सिंह साहब, हम आपको आमंत्रित करते हैं। साथ ही सौरभ बदोनी जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप मंच पर आएँ। मिस्टर दिवाकर P सिंह, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप स्टेज पर अपना स्थान रहें। राजेश पहाड़िया जी, चीफ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी मंच पर आएंगे। हमें बहुत खुशी है कि अब हम अगले पैनल की ओर और अगले डिस्कशन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। स्टेज पर हमारे बीच में एमिनेंट गेस्ट अपना स्थान ले चुके हैं और अभी अभी हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो हमारे बीच आए और एमिनेंट गेस्ट ने आज के सेकेंड डे के इनॉग्रेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब इस आयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू कि हम महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करें और एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर आप सभी के लिए स्वागत। साथ ही ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विनीता सुधांशु जी से, जनरल मैनेजर अपीडा, कृपया आप आएँ और इस अगले सत्र के लिए जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो आप प्लीज़ सेट करें। विनीता सुधांशु जी।
Hello. A very warm good morning to everyone. And again, I would like to welcome all the participants in this today's second day of our International Rice Summit. And yesterday, I have mentioned that it's a very big, good platform where we can have some Chinan Manthan so that we can discuss, deliberate, and make a roadmap for going ahead. So with these, once again, Honorable Chairman Apida, Shri Abhishek Dev, distinguished dignitaries on the dais, esteemed representatives from the regulatory bodies, financial institutions, industry, trade, and ladies and gentlemen. A very warm good morning to all of you. It gives me a great pleasure to welcome you to this Chintan Shivir on non-basmati rice exports being held as a part of this India International Rice Summit 2026 here in Raipur at the heart of one of the India's most important rice producing region, which contributes and plays its position at number 5 in India. That's why we call it as a Dhanka Katora. And this Chintan Shivir has been conceived as a focused, solution-oriented dialogue, a platform where experience from the ground meets policy intent and where challenges are discussed, not merely to be acknowledged, but to be addressed and do the Chintan. So why this Chintan Shivir matters? The non-basmati rice today forms the backbone of India's rice export volumes. It feeds millions across Africa, Asia, and neighboring regions and plays a crucial, sensitive role in the global food security. Yes, it is also a segment that operates in a highly competitive, low margin, and risk-sensitive environment. Exporters in this space routinely deal with diverse and the evolving quality and compliance requirement of the importing countries, rising logistics and inland transportation costs, payment and credit risk in certain markets, and at times uncertainty affecting trade continuity. So despite these challenges, global demand for Indian non-basmati rice remains strong. This tells us something important. This issue is not demand, it is readiness, resilience, and risk management. The purpose of today's dialogue is, the objective of today's Chintan Shivir is not to visit well-known problems, but to collectively explore implementable solutions to strengthen the supply chain of export of Indian rice to our different, international destinations. So we want to deliberate on how the quality and the traceability can become tools for competitiveness, not compliance alone. How logistic and the cost efficiencies can be improved through coordination and scale with all these stakeholders. How finance and risk mitigation instruments can be better aligned with agri-trade realities, and how regulatory practicability can support long-term business confidence. This is why we have deliberately brought together regulators, banks, exporters, logistic players, and the industry representative and at one platform. So here the APIDA's role. APIDA's role has steadily evolved from being only an export promotion body to becoming a facilitator and to across the export ecosystem. And our focus today is on strengthening the quality assurance and testing infrastructure, supporting digital traceability and certification systems, promoting GI tag and region-specific rice varieties, engaging with bank, ECGC, Exim Bank on trade finance challenges, working closely with the state government to align production clusters with the export market so that we will be able to, address and gain the confidence of the importing countries. Here in Chhattisgarh, with its GI rice varieties and strong production base, we see a significant opportunity to build export-oriented, value-driven rice clusters. So several times will come up repeatedly in today's discussion, like trade finance, payment security, policy, especially for neighboring and the sensitive trade corridors, traceability and quality assurance, branding of Indian rice at the international platform, and
and the value-added products of rice, which yesterday only we have launched, and we have dedicated the project which we have awarded to IIRI to the trade, so that the trade people can come forward and go into for value-added products as well. So these are not the isolated issues, they are interconnected, and so the solution require institutional collaboration, not isolated intervention. So all the stakeholders in the supply chain has to play a very, very crucial role in strengthening the supply chain of export of Indian rice. And we hope to achieve by this Chintan Shivir a shortlist actionable recommendations, clear identification of institutions that can take these forward, and a few pilot ideas that can be implemented over the next 12 months. So the intention is to move discussion to demonstration. So not only the discussion, we want to demonstrate, like when we have taken few decided roadmap in the last first edition of India International Rice Summit. So we were able to, address a lot of things, like we are in a position to export the fortified rice kernel from the state of Chhattisgarh to two important destinations, opening of APEDA regional office so that we can strengthen the ecosystem within the Chhattisgarh, and to collaborate and coordinate with all the stakeholders in the state to strengthen the supply chains from the state. And now what we are looking ahead is, in a moment, our Honorable Chairman will also share a broad strategic and the policy perspective, including how India can strengthen trade relationship, manage volatility, and to provide the largest directional framework within which today's detailed discussion will take place. So at the last, I would like to conclude by saying that India's leadership in global rice trade has been built on scale. Its future leadership will build on trust, transparency, and thoughtful policy support. And APEDA remains committed to working with all the stakeholders to ensure that non-basmati rice evolves from being seen merely as a bulk commodity to being recognized as a reliable, responsible, consistent supplier and globally trusted product category. So I thank you once again all for looking forward to conclude this constructive and outcome-oriented deliberation during this Chintan Shivir. Thank you very much. थैंक यू सो मच वनीता मैम। और अब आप सभी के बीच में एक प्रेजेंटेशन ओवरव्यू ऑफ नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट लैंडस्केप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, इस पर बातचीत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं एम रामाकृष्णन सर को कि आप आएँ और अपना एक प्रेजेंटेशन इस पर देंगे। Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. प्रेजेंटेशन चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो हम फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते थे। हम पढ़ते थे कि एक टाइम पे इनफ फूड प्रोडक्शन नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे। मैं छोटा था तो मैं अपने माँ के साथ राशन की दुकान जाता था, लाइन पे खड़े होके जो है चावल लेके आता था। हमारे घर में वही चावल कंज्यूम किया जाता है। आज के ज़माने में मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोग राशन की दुकान जाते हैं। वी यूजुअली गो टू अ मॉल और वी ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन और व्हाटएवर इट इज़। सो पर्सनली इट इज़ अ मैटर ऑफ pride and joy that from a place where basic food requirement was unknown to a place where now we are talking about exports, competitiveness, बाकी देश क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें आगे क्या करना चाहिए। I think we've grown by leaps and bounds. Of course, challenges are there, problems are there, but I try and believe, the glass is half full. So with that personal story, I'll just go through the presentation.
मर्फीज लॉस बोलते हैं ना कि जो खराब हो सकता है वो होता ही है, सो आई थिंक वी कैन स्किप दिस. Okay, thank you. My bad. So I'll quickly go through the presentation. I think we have talked again and again about the overall context and the overall purpose of the meeting. So I'll quickly jump to some things which we have not spoken over the last 2 days. We know the numbers. We are one of the largest. We have a significant share. Interestingly, हमारा जितना volume of exports grow हुआ है, हमारा value का growth उससे slightly higher है. I know people keep talking about हमारा price extraction is not significant, but at least the rate is gradually increasing. That's the only thing I wanted to share here. We've spoken about basmati rice, we've spoken about non-basmati rice. Fortified rice is something, I just want to leave one thought. Apart from general conversation about, why it is important, a lot of attention is also coming from the DFIs, the World Banks and the ADBs and so on and so forth, कि food security से nutrition security की तरफ बात shift हो रही है. So there is a lot of interest from these organizations as well as to how are you strengthening or fortifying your basic food ingredients. And the more we can engage these kind of organizations also into our conversation will help our future competitiveness in exports. I think we've spoken about these numbers. Non-basmati rice, if you look at it, to put it crudely, गरीब देशों में ज़्यादा बिकता है, जो अमीर देश है वहाँ पे कम बिकता है, वहाँ पे बासमती बिकता है. The question is, how do we strengthen our presence across all the countries? So this is something I think we haven't spoken enough in the last few days, which is how do we compare to the other countries? There is obviously, we have our own strength, but there are other countries which are slowly emerging, and you can't ignore it. Most of the conversation when it comes to other countries is around Pakistan, कि चलो वहाँ पे भी बासमती है, but we are doing better than them. You can't assume that we will always be better than them. Thailand का जो increasing premium rice है, if you look at the jasmine variety as well as the home Mali variety, it's slowly building up. थोड़ा सा उनका cost of production high है, but they do have like an emerging presence, and we need to make sure that we are keeping up with these kind of guys. Vietnam है, strong presence है in the non-basmati area. थोड़ा सा उनका specialty segments में जो है limited variety है, but again, these are the guys who are investing in the future and we need to catch up with them. Cambodia और म्यांमार को थोड़ा सा हमने combine किया है. If you look at it, their price competitiveness is high, and we need to be cautious about it. We keep saying कि हमें अपना price realization बढ़ाना है, but if the competition is going to go further low in prices, then we need to figure out how to kind of manage our costs, so to say. They have their own challenges. उनका quality control, etc. थोड़ा सा इतना evolved नहीं है, so we have to keep our edge up. If you look at it, tech side से जो है, multiple initiatives हो रहे हैं, both from the startup world as well as from a government world in terms of supporting startups and digital initiatives, whether it is AgriStack, whether it is market linkage, whether it is use of IoT, so on and so forth. In fact, we'll come back to this topic, how technology can or should play an evolving role in improving our competitiveness. If you keep growing rice the way you were growing, let's say 50 years back, so you will basically add to your problem, so to say. And I think we have spoken enough about GI tag, log GI index wala, and the value-added products which are going to really drive the growth going forward. While I've given some examples of value-added products which are coming from other countries, I was quite pleased to see yesterday that we had our own examples of इस तरह के हम cookies बना रहे हैं and so on and so forth. And I think we need to figure out the marketing side of it. Product develop करने के लिए तो there is enough knowledge, but how do you really kind of push it into the market
I think that's where we need to put in more effort, so to say. अपेडा के इनिशिएटिव्स के बारे में हमने काफ़ी कवर कर लिया. We'll do a little bit of a conversation in the panel discussion. लो GI इंडेक्स का हमने लॉन्च किया हुआ है. IIRS से जेंटलमैन बैठे हुए हैं. We'll talk again in the panel discussion. I just want to quickly jump to GI tag is making a huge difference. Origin story, everybody enjoys a good story these days. You know, the consumers want to understand kahan se aa raha hai. So the more efforts which can be built around marketing of the GI tag products, the higher the money which the rice farmers will make. Of course, Chhattisgarh has its own success with the Jiraful and then Nugri Dubraj. This is what I wanted to spend a little bit of time on. This is not what we have spoken too much in the last 2 days. जिस तरह से global regulations evolve हो रहे हैं, if we don't get our traceability initiatives in place, in the next 10 years, it will be difficult for Indian exporters to export anywhere. I'm being very blunt and brutally honest out here. We really need to tighten the DPI initiatives around traceability, because after a point of time, in markets like Europe, they will simply not accept our exports. We need to take some very serious, policy initiatives on this. Carbon credits is another area which we need to explore, very critically. There are own challenges in terms of the climate change conversation, but everyone knows rice is the largest guzzler of water. So any effort you take to reduce the water consumption and hence reduce the methane creation has a positive impact on possible carbon credits. There are some pilots which have happened. There is some conversation which is happening with the government. I think this is a place which, again, rice growers and rice exporters need to look at closely. Do more pilots, engage with the multiple bodies involved in this conversation and kind of take it forward. GI tag के बारे में हम बात कर चुके हैं. GI के ऊपर किस तरह के marketing activities हम करते हैं will make a huge difference. The other day someone was talking about Japan में अभी chef kind of activity की है कि ये हमारे यहाँ से rice आया है, इसका flavor taste करिए, so on. So I think those kind of marketing activities are important. And forgive the fancy word, rice is a service, but the whole point is if you can bring the whole package together, if you can engage with buyers from a long-term point of view कि boss मेरे को ये वॉल्यूम चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, ये वैल्यू एडेड चाहिए, and if there is a consistent and predictable progress with those guys, I think that will make the maximum impact for the ecosystem, so to say. So I think these are some themes which, from a forward-looking perspective, we should look at. And I think, as we spoke, चिंतन शिविर का पर्पस है कि हम इन मल्टीपल टॉपिक्स में बात करें कि क्वालिटी में क्या हमको करना है, लॉजिस्टिक्स में क्या करना है, जीआई में क्या करना है, फाइनेंसिंग में क्या करना है, मार्केट एक्सेस में क्या करना है, and that's where we will move to from a panel discussion point of view. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your presentation. और अब जो हम पैनल डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे इस चिंतन सत्र में, और उसके लिए भी मॉडरेट करने वाले हैं रामकृष्णन सर. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम. आई एम हैंडिंग ओवर दिस पोडियम टू यू, और आप इसे आगे बढ़ाएं सर ऑन द डिस्कशन एंड ऑल द पॉइंट्स. Thank you. Hello. Thank you. मैंने ही कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया था, तो it becomes easy for me to start shooting the questions. I think Mr. Divakar Singh, you had to leave a bit early, so maybe I'll start with you. Of course, one critical part of any agriculture activity, and especially in exports, is the financing side. And with unknown markets, global markets, there's always this risk of कि payment guarantee कैसे होगी, how does the exporter get protected, how does the farmer get protected.
you are in the hot seat of the whole financial space. So just give us some guidance on, how those risks are mitigated or how it can be mitigated. Thank you. So, good afternoon, everyone, people on the dais and in the front. So, at the outset, before replying to your question, let me thank this India International Rice Summit organizers, the president, and the team for organizing this kind of summit here in Chhattisgarh, which is known as the Ball of the India. Now, on part of the bank, because probably I am the only banker sitting over here. So before you come to the exporting of rice, there is a whole ecosystem behind it, right from the growing the paddy, then procuring it, then storing it, then coming it to the millers. So the banks, any bank for that matter, plays that important role at each and every step, right from the lending to the farmer, then to someone who is making the warehouse for storing the rice, and then the rice travels to the millers, and then to exporter. Some exporter are millers as well. So in the whole process, the role of banks is very important. Coming to the export, especially of non-basmati rice. So the major export goes to the African countries. And if I may tell you, Bank of Baroda, it is India's international bank, known as, and amongst the India's bank, we have the maximum presence in the African countries. So that way, we can be of much more help to all the exporters. Coming to your question regarding the LC or the payment, the uncertainty of payment, especially in case of African countries. So there are various tools that both exporters and the banks use. One such tool is like you have to first insure your shipment. There is ECGC, they provide the insurance. And when you come to the bank does its own due diligence on the countries that you are exporting, on your counterpart to whom you are exporting. On that also there is due diligence. There are various tools through which we do the due diligence. And if at all there is some failure, then ECGC guarantee, and there are other guarantees also, they provide the cushion to the exporter and the payment, in realizing the payment in time. Even on the accepting the LCs and all, there are the list of banks on which we rely. There are, say, top 500 or top 1,000 banks. So banks have their own risk management procedure through which we decide that which banks LC to accept, which not to accept, who are your genuine bona fide purchaser there, whom you are supplying. So with this whole ecosystem, I don't think there is any issue to worry on the part of the exporters. I hope I replied what you asked. Thank you so much, sir. Yeah. Appreciate it. Mr. Gnanasundaram, you were just talking about how the whole phytosanitary certification and the quarantine procedure is managed by your organization. If I were to look at the perspective of the traders and the exporters, many times they feel, क्या बकवास है, कितना काम करवाते हैं? And there is possibly not enough appreciation of how all this contributes to the eventual execution of export trade, so to say. Would you like to elaborate a little bit? Thank you. Respected Chairman Sir, APEDA, and all the exporters and officers from APEDA and other organizations and banks and all. Good afternoon to everyone. I am Dr. Nyan Sambandam, Joint Director, Scheme in Charge, Plant Quarantine, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Ministry of Agriculture, Faridabad. So we are the National Plant Protection Organization, shortly called as NPPO, who issues the phytosanitary certificates, PSCs,
as per the requirement of the importing country. So the first and foremost requirement for the exporter should know the phytosanitary conditions of the importing country. That is very, very important. Without knowing the phytosanitary certificates, if you are exporting, then there is a likelihood chance of your consignment rejected at the importing country. So you have to pay the penalty, or the consignment may be deported, or like that. So once, before export, you should be very, very, it is very, very critical to ensure the phytosanitary certificate, for which certain importing countries are issuing the import permit well before the export of your consignment. So you should ensure that. That is number one. For USA and China, we are the National Plant Protection Organization who recognize and issue the registration certificates with the joint inspection of APEDA for the rice processing units. So more than 200 rice processing units have been accredited or registered by NPPO India for the USA, and then more than 190 rice processing units are registered for export of rice to China. So these informations you can obtain from our plant quarantine websites, that is PQMS. If you go to Google and type Plant Quarantine Management System, PQMS, so you will get all those informations. So during the year 2024-25, Plant Quarantine Department, we have issued more than 48,500 phytosanitary certificates, which comprising of the quantity almost 15 million tons of non-basmati rice. And also the day by day the export volumes are increasing, and this year it is we expect that it will increase more, as well as the applications what we are receiving for the registration of rice units for USA and China for the current year. Also, so far we have got more than 50 applications each for USA as well as China. So Plant Quarantine Department is working very close to APEDA for promoting the rice. We are very close access with our Chairman Sahab and Madam Vinita Sudhanshu, and we are coordinating in a better way. And we are improvising, and we are bringing, now we are working on developing online modules for the registration of rice processing units for USA and China. Hopefully, within a short span of time, we will be introducing the online modules so that the exporters can avail the benefit of the certification process, which will really reduce your timeline, and it is 100% paperless work, so that it is more transparent and traceability will be there. So that is the recent update we are making it. And the risk which the exporters are facing, mainly because of the non-awareness of the importing country requirement. So I should once again request the exporters to give importance to know the import conditions of the phytosanitary import conditions of various countries. That is more important. If you have any issue on that, please contact us, or you can contact the APEDA, through which we can able to provide the exact information to you. Number one. Number two, the fumigation requirements before the export of the rice consignment, non-basmati rice consignment. So most of the countries are asking for the freedom status of caprapitil, for which exactly for Vietnam, it is requiring the methyl bromide fumigation for 100 grams per cubic meter for 120 hours and all. And certain countries like Malaysia, USA, China, Russia, they require the freedom status of caprapitil and asking for 80 grams of methyl bromide fumigation for 48 hours. So these are the requirements, and certain countries, including the African countries, they require
aluminum phosphide fumigation, 12 grams per metric ton for 120 hours. So these are the prerequisites, so one should be very cautious about that. So we are facilitating and we are issuing being the regulatory authority, we are issuing the phytosanitary certificate. That is also totally online. The exporters, you are aware that you are applying the export certification for the requirement of phytosanitary certificate in the PQMS online. So that is a paperless and which is a most transparent system wherein you will get the history and it is also infused with the timeline. So these are the overall workflow as well as the requirements of the plant quarantine department. So I am really happy to participate this summit. Thank you for the opportunity to the respected chairman sir and Vinita madam and all my colleagues. So feel free to contact us. We are here to serve you at any time. So we will work along with you as well as APEDA to promote non-basmati rice exports, particularly from Chhattisgarh and the other parts of the country. Thank you very much. Jai Hind. Thank you. थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच से दिवाकर सिंह साहब को अपने व्यस्त कार्यक्रम में कहीं जाना भी है, इसलिए एक छोटा सा इंटरप्शन है और हम उन्हें फेलिसिटेट करवाना चाहते हैं। उमेश जैन जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। और दिवाकर सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर एंड आपने अपना वक्त दिया है। ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, बट क्योंकि दिवाकर सर को कहीं जाना भी है और वो समय हो रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि सर को स्मृति चिन्ह देते हुए फिर हम यहाँ से उनको थैंक यू करते हैं। ये पैनल डिस्कशन लगातार जारी है, विभिन्न मुद्दों पर, मसलों पर बातचीत हमारे बीच हो रही है और सभी गेस्ट स्टेज पर अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं दिवाकर सर, आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नाउ वंस अगेन ओवर टू द मॉडरेटर सर, प्लीज़। Thank you. Moving on, Mr. Rajesh Bahadia, we were discussing about value-added products, and it was good to see some of the people kind of showcasing their new offerings yesterday as well. But based on your business experience, what do you see as the overall scope? Kitna abhi ho raha hai, kitna aur ho sakta hai? How do we kind of increase that business in India? Thank you, sir. And thank you, APEDA and the entire team of IIRS for organizing such a wonderful event and giving me an opportunity to be part of APEDA's Chintan Sivir. I'm into this trade since almost 3 decades and I've been visualizing the in and outs and everything about the logistics. I've been hearing the banking part. If you compare the global trade, India has been contributing to almost 46% of the global trade, combined both basmati and non-basmati. Sometimes we get a little threat about the pricing, which we make a comparison with co-exporting countries like Pakistan, Myanmar, and maybe Cambodia. But major threat is from our next door neighbor, Pakistan and Myanmar only. So far as for 25-26, we will be touching the same number, which we have done it last time. The percentage will remain the same. The portion of other 3 countries will be changing a little bit. Maybe they will be having 1 million ton this side or that side. Like Pakistan will be having an surplus of around 2 million ton, but their major cargo has been shifted to feed consumption. So they will be exporting around, say, 7 to 8 million ton. India will be almost touching the equal number of 20 to 21 million ton. I'm not very great hopeful that we will be touching a magic number of 25 million ton because there is a glut of supply which is already there and we are facing a tough competition about the pricing which we have been
competing with our neighboring countries. This is what it is. Thank you. Mr. JB Singh, we were talking about infrastructure, and obviously, in overall agriculture, good, appropriate infrastructure becomes an integral part of the value chain, so to say. So from your perspective, what kind of interventions, what investments, what modifications can significantly help the export of rice from India? Well, first of all, I would like to thank IIRS for conducting such a wonderful summit, and I thank them for inviting us, and I thank APIDA also for including me as a fellow panelist. I am honored to be among such enlightened panel. Let me introduce you. I am JB Singh, Chief Manager, MMLP Mihan. As far as infrastructure perspective is to be taken into consideration for Raipur, we are having a 113-acre multi-modal logistic park right here in Raipur, well connected with the national highway. We are having enough storage facility. We are having enough container handling facility. We are having enough container handling equipments, warehousing, direct connectivity to ports, both the ports, whether be it Visakhapatnam or be it JNPT. And apart from this, we are having, we are willing to start as a new initiative, Concor-owned containers to be exported from India to various parts of the world. That we are going to do. And having said that, we are having a multi-modal logistic park of 113 acre, and enough has been developed. And if trade wants, we can enhance the facility further. But right now, as far as rice export from Raipur, Chhattisgarh is concerned, our facility is underutilized to only 10%. That is a major cause of concern for Concor and for this area as a whole. So I will urge, I will use this platform to urge the exporters of rice to use our facility, because right now we are burning a lot of money. And still we are very eager. We hope that exporters of rice from Chhattisgarh and area around uses our facility, and because they can use, they can get the custom cleared from their doorstep, from Raipur. So that will be hassle-free and tension-free movement. This is what I feel. The facility right now is enough, and still, if the trade and exporters want to enhance a few of them, we are ready to do that. That's it. Thank you so much for that. Madam Vinita Sudhanshuji, thanks for your introductory talk, and kudos to APEDA for having done so many different things and introducing so many different concepts and setting up the HS codes, etc. Given that you closely monitor what's happening with the overall globe, what are some of the global best practices, the models, the evidence-based practices, which you think will be most applicable for us? Where should we take it forward from here? Yeah, I think it's a very good question, and I would like to just share, because all the stakeholders in the supply chain, they are playing their role, crucial role, in fact, I'll say, to strengthen the supply chain of export of Indian rice from the country. But being from that APIDA as a promotional body under Ministry of Commerce and with a mandate to promote Indian agriculture products at the international in the international markets, so APIDA is taking a lot of initiative for promoting Indian rice as well, because rice contributes approximately 50% of share, 40% share in the total agri-export basket of APIDA scheduled products. And like in the morning also, Chairman Sir has mentioned about the two important trade events where APIDA is a partner country. One is the Gulf Food, another one is the BioFac. So in Gulf Food being a very potential market, the Middle East, so this year we are dedicatedly, promoting the GI varieties, and the efforts are being to develop the cuisines as per the taste of the
the international consumers. Then only, because we want to shift from, of course, we are doing the commodity exports, but we would like to make, more efforts to promote the premium variety so that we'll be able to fetch the premium prices. Because we have number of varieties. Since yesterday I was mentioning about the Japan story. The same way we were discussing with Chairman Sir that we got an opportunity in China also, and we are planning for a Singapore, so that we'll be able to tap these markets, some new dimensions in the, in the international market, so that we'll identify and we'll get that, the premium price for our premium varieties. As my partner, Mr. Rajesh Pahadia, has also mentioned that they have set up a target of 25 million metric ton. They are saying that we'll be able to touch, but with this number, I think we'll be able to fetch more value for our the potential premium varieties that we are taking. Because today also in the exhibitions area, you must have seen the culinary zone has been created, and our chefs are preparing the dishes as per making the target to the international market. They are preparing the dishes so that people will also feel that yes, this variety is suited for their cuisines, and that's how we are trying to enter in those markets and get more value to our rice. So these are the efforts we are taking and continuously, and I would like to thank all the panelists, or even for their role, the contribution in strengthening the supply chain of export of rice. Thank you very much. Thank you. Dr. Badauni, because ma'am, was speaking so passionately about GI-based and premium price. I know in your research you've come across and you've spoken about, storytelling and branding and how it is important for promoting this kind of rice. Would love to hear your thoughts on that. Yeah, thank you, Ram, for that question. And good afternoon to everyone. So actually, it's a very important question, interesting question too. So I think, as I highlighted in the yesterday's presentation, it's very critical to highlight those unique value propositions in our rice varieties, especially for the countries like us, where we are sitting actually in the country with around 4,000 to 5,000 at least traditional varieties with unexplored value propositions. And that's where we made some effort, or a kind of a step towards it, to characterize that set of germplasm. So it's very critical, first of all, as I said. So I think what exactly the unique value proposition means to us. So it's important to understand that. So I think, first of all, what would be important, that what exactly we are trying to say in that term is, for instance, origin. We have several, more than around 30 or 30 GI tagged rice varieties. It's important to understand their value proposition and actually from where they are coming. And is there any additional value, advantage out of that origin? So for instance, let me give you an example of Kala Namak. So Kala Namak rice actually is originated from the Siddharth Nagar, which is again a border district of UP. So there, this Kala Namak rice is known to be gifted by the Lord Buddha to their disciples as a blessing around 3,000 years ago. So it's important that its origin is very important to have that type of USP that, okay, we are just cultivating that in the GI region, where exactly it is related to the Gautam Buddha, and again, we need to see the export proposition in that respect of the religion, like Buddhism, and also the countries where we are like to highlight. So that's currently, it could be an advantage of the origin. So that's something is important. Likewise, it's similar, and or likewise, again, other traditional varieties, even be it Jeera Phool, Nagri Dubraj, be it other GI varieties across the nation. So there is something origin. And in addition to that, it is important that what the geographical package, because this GI tagged varieties, why those are important? Because there are certain climatic condition or difficult climatic condition which are favoring that type of quality. So how we are making sure
that the quality and all those, associated packaging practices. So I think I just said 2 points. First of all, the cultivation practices, and second is climatic conditions. So how we are making sure that that is kept in check. And then again, the organization, like again, the different GI consortiums and APIDA, regional offices, I think those interlinkages with the institutions can make sure that, again, if some cultivation is going on, so how we can make sure that being done, so that the quality, as I mentioned, to the origin and what we are getting in terms of geographical advantage should be intact. So that is one. Second point again is the unique value proposition with respect to the quality. So premium quality and nutrition. So as we discussed yesterday, what it means to the quality. So like for instance, the aromatic, because there are several aromatic rice varieties we have in India. So sustained aroma or consistent value of that aroma in the rice value. Again, low GI, the glycemic index value, which is again important. And then so it's very important to have those tested actually in couple of years. Those USP, consistent performance of the USP, so that we have even different batches across the year. We make sure that that quality should be intact. Because if we are hitting the global market, we should not feel that glitch later on once we started our journey. So that's something we have done, but again, there are a lot more efforts are needed in that direction. And so that is actually the second advantage, and how it can be tagged. So that's where again, institution, exporting agencies like APIDA, which have already contributed and collaborated with us and other institutions, that seamless integration is needed. So that works well. And third, last point is sustainable aspect, like willingness to pay. We also do, being IIRI, a survey across the world. What are the parameters of willingness to pay by international, international markets? So I think what are the USPs and also the origin part I just said, and sustainability angle, that sometimes women sustainability aspect, if those are being cultivated and processed by farmers or certain women groups, how that angle can be highlighted. And similarly, against the carbon neutral, as you highlighted yourself so how those things are being practiced and then highlighted into the label on branding. So that is also important. And yesterday, we saw that how US companies even, offsetting the tariffs based on certain value proposition, consistent quality. So that's again, that's a package from those 3 points. If we consider, then I think we are very close to actually highlight the, that I mentioned, the export quality, branding, and again, the third is, last one is storytelling. It actually, what I said is, why I just made as a last point, because out of these value proposition, how we tell our story to make, and the combination of USPs, like low GI, high aromatic, with sustainability practices, or different permitting combination based on the actual value proposition on table with us. So that's something I would like to summarize my response on that. Thank you. Thank you so much. As you were just narrating the answer, one thing which did catch my attention was the gender diversity. Whether it is this panel or a large part of the audience, I think we can do better with more, women participation in this ecosystem as well. So good that you brought that out. Anupam, my last question is for you. First of all, I hope you're feeling better. I really appreciate that despite your fever, you're here. Kudos to you. We've spoken about, the overall rice exports, specifically in non-basmati. What is the cooperative movement doing, and where do you see scope for the, the loads of cooperatives to do better with exports? Presently, the cooperatives, the packs are right now in a very, very minimal fashion in some of the states where the SLA, the service level agencies are using the cooperative structure. So on a minimal scale it is coming, but I want to lay out a very important context for that, what cooperative can do
and it's not specific to rice, it's applicable to the entire agriculture ecosystem. And we have seen the power of cooperative in dairy, starting from Gujarat and then expanding it in some of the northern and southern states. I'll just give you a very stark reality in some numbers, which will make you understand, or everybody understand, that what cooperative holds for India's potential for production, growth, export, everything put together. India has roughly 141 million hectares of the net sown area, and it translates into anywhere between 205 to 220 million gross crop area, depending on what cropping intensity in a particular monsoon season plays out. So that's the net sown and the gross crop area of India. It is cultivated by close to around 150 million farmer households. The last known number was 2011, which was at 144 million farmer households. I believe the further disintegration of the land holdings into smaller parcels would have taken the farmer households from 144 to close to around 150 million plus farmer households. So this ecosystem of 141 and 150 put together produces close to around $460 billion of agriculture produce, which is around 17% of India's GDP. Now, if we look at China, it has 106 million of net sown area, which is close to around 40% less than what we have. The gross crop area of China is around 166 to 177 million hectare, which means that it has got a higher cropping intensity because they've got better irrigation practices. And it is cultivated by 208 million farmer households, which is roughly 33% higher than India's farmer households. So which means that the per capita land holding in China is even lesser than the per capita land holding in India. The India per capita land holding is around 0.6 hectare, and China is somewhere between 0.3 to 0.4, depending on the province you are looking at. So what India produces on 141, China produces close to 4 times of that in 40% less land. They produce close to around $1.5 trillion of the agriculture produce. And they do it with much adverse land holding and a much higher number of farmer households. And how they've achieved it in last 2 decades? Purely through the cooperative route. So this cooperative has been implemented in China in such a way where the entire production has just exploded, in a sense that the production has gone up by more than 4 times, and what it has resulted into for China. So despite $1.5 trillion of production, China still imports close to $200 billion plus of agriculture produce and food. So essentially they have got a net supply, a total supply of 1.7 trillion. Out of 460 billion that we produce, our net trade is around 32 billion. We export around 52 billion. We import around 18 billion of pulses and edible oil. So we have a $32 billion of net trade, which essentially leaves only 460 minus 32, around 428 million tons of $billion of worth of food for the same population size, 1.45 billion people. And what it has resulted into, that China has added 9 centimeter of median height to their 1.45 billion people in last 15 years. 9 centimeters. Their average IQ has gone, median IQ has gone beyond 100. Why? Because they have been food sufficient. So they could do it using the cooperative route, and the same route holds the same promise if we do it right. And I think the process has begun. Wow, beautiful stats, and I had no idea about the increase in the height of Chinese people and how that's linked to the food. Lovely sharing those thoughts about how the cooperative movement has really worked well in China. Another thing for us to learn from China. Thank you so much. I really appreciate all the insights from my fellow panelists out here. You brought a lot of valuable points to the conversation. Thank you also to India International Rice Summit for getting us all together for this beautiful opportunity. Thank you to APEDA Chairman Sir Abhishek ji and Vinita Madam for this opportunity. With this, we bring this session to a conclusion. Thank you. So now may we request to Shri Abhishek Dev sir, Chairman APEDA, कि अभिषेक सर आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और
हम आपके भी विचार सुनना और जानना चाहते हैं। बहुत ही शानदार डिस्कशन यहाँ पर हुआ है सभी पैनलिस्ट के बीच में। सो नाउ वी रिक्वेस्ट श्री अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और हम आपके भी विचार जानना चाहते हैं। अभिषेक सर। मैं सबसे पहले जो हमारे सेशन के मॉडरेटर मिस्टर राम फ्रॉम प्राइमस पार्टनर्स, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये सेशन मॉडरेट करा। उनकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी। जो भी हमारे राइस सेक्टर से काफ़ी जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करा और एक कॉन्टेक्स्ट को पूरा सेट करा। तो जो हमने आज ये एक सेशन रखा था चिंतन शिविर का, तो ऑन राइस, इसमें हमने जो भी हमारे तरह तरह के जो राइस इकोसिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, चाहे क्वालिटी का हो जाए तो उसमें ज्ञान जी आए थे, उन्होंने पूरा एक पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे कई रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि उनको पूरा करना पड़ता है एक्सपोर्ट करने से पहले। क्योंकि देखा जाए तो जो डोमेस्टिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी सेट करता है, कई कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे FSSAI के रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा होती हैं। और रिक्वायरमेंट्स पूरी करते भी हों, बट उसके साथ साथ सर्टिफिकेशंस की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि आप कोई चीज़ को निर्यात कर रहे हैं तो वहाँ की इंपोर्टिंग कंट्री को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी प्रोड्यूस आ रहा है उससे जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आए, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले प्रोडक्ट से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्वालिटी है, ना सिर्फ क्वालिटी बट जो सर्टिफिकेशंस हैं वो पूरे होने चाहिए। तो इन्होंने जो PQMS का जो बताया पोर्टल, वो बहुत ही अच्छा पोर्टल है। उसके बारे में पूरा हमें आगे भी जो हमारा पीडा का जो ऑफिस है यहाँ पर नया खुला है, पूरा हम NPPO के साथ कोलैबोरेशन में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इसको आगे हम डिसेमिनेट करेंगे। बाकी जो दूसरा इशू है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स का जो इशू है, तो लॉजिस्टिक्स में जैसे बताया गया कि यहाँ पर हमारा कंटेनर डिपो भी है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है। तो इसमें हम काफ़ी चर्चा में हैं भारत सरकार के साथ, कॉनकोर के साथ भी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, कि कैसे जो यहाँ का जो फैसिलिटी है इसको काफ़ी आगे कैसे यूटिलाइज़ करा जा सकता है। जो एक इशू आता है जो कि आपको पता ही है कि जो रीपोजिशनिंग चार्जेस हैं काफ़ी हाई हैं, मतलब तो क्योंकि यहाँ पर एज सच इतने इंपोर्ट्स नहीं है, जो माल जो भी आता है, जो आपका कंटेनर्स आते हैं प्राइमरीली खाली आते हैं, तो फिर उसको पहले यहाँ लाने का एक ख़र्चा है, उसको उठाना पड़ता है और फिर आगे से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का है वो तो खर्चा है ही। तो इसमें काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि कैसे रीपोजिशनिंग चार्जेस कम करे जाएं, कुछ अगर सब्सिडी मिल सके या कोई इनमें रेट्स कम हो सके। इसमें काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, कॉनकोर के साथ भी बात चल रही है। कुछ चार्जेस कम हुए हैं बट आगे और भी इसमें संभावना है कि ये कम हो सके। तो फाइनेंस और बैंकिंग पे भी बात हुई कि कैसे जो हमारा बैंकिंग और फाइनेंस है उसमें काफ़ी अल्टीमेटली वैसे तो एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर है, बट कई बार जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फाइनेंस की, जो कोलैटरल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, कई बार वो लोग मीट नहीं कर पाते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को। तो माइक्रो लेवल आपने देखा कि आज
काफ़ी 7-8 बैंक्स के यहाँ पर आज स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी जो स्कीम्स हैं बैंकिंग और फाइनेंस की, वो अच्छी तरह हमारे निर्यातकों को, जो हमारे एफपीओज़ हैं और जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं, उनको पता चले। और जो कई बार कोलैटरल फ्री लोन्स भी होते हैं, तो वो माइक्रो लेवल पे, ग्राउंड पे स्कीम तो होती है लेकिन इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। तो उसमें काफ़ी ज़रूरत है कि इसको करा जाए। और जो हमारा पीडा का ऑफिस है, इसमें अब यहाँ पर सक्रिय होके बैंक्स के साथ जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन्स वगैरह हैं हमारे स्टेक होल्डर्स को मिल पाएँ। बाकी जो इरी के हमारे डॉक्टर साहब हैं, सौरभ जी हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी एक प्रेजेंटेशन दी। हमारा कल प्रोजेक्ट है एक तरह से इरी को जो हमने दिया था, जो कि जो हमारे जीआई वैरायटीज़ हैं उनकी मैपिंग करी जाए और उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, वो प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया बट अभी आगे काफ़ी और भी करने की संभावना है। हमने इनके साथ बड़ा ही अच्छा एक जापान मार्केट में एक इवेंट कराया था, बट अब इस तरह के हमें और भी इवेंट्स और भी मार्केट स्टडी करके कि वहाँ पर कौन सी हमारी वैरायटी है जो कि एक्सपोर्टेबल है, वहाँ पर एनालिसिस करके वहाँ जाएं, एक्सपोर्ट प्रमोशन करें ताकि ऑर्डर्स मिलें। अभी जैसे बताया गया कि चाइना में, सिंगापुर में, फिर आपका फिलीपींस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी जीआई वैरायटीज़ के लिए, तो उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिस्टर राम ने वो पर्सपेक्टिव रखा था अभी कि जो हमारे रेट्स हैं, जो हालांकि जो यूएस वगैरह है, थाईलैंड है, उनसे काफ़ी कम है, और वियतनाम और आपका जो थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार के कॉम्पिटिटिव हैं। बट जैसा कि बताया गया कि एक डबल एज स्वॉर्ड है, रेट्स अगर बहुत ज़्यादा भी कम हो तो फिर एक लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या बहुत ही सस्ता है जो कि बिल्कुल ही वहाँ पर जा रहा है कंज्यूमर्स को जहाँ पर इतनी क्वालिटी की कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वो मार्केट को तो हमें केटर करना ही है, बट एक तरफ से एक अलग सेगमेंटेशन भी करना है। तो जैसे जो बताया गया कि जीआई प्रोडक्ट्स हैं, तो और भी मतलब हमें जो जैसे बताया गया कि जशपुर है, और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर कई जीआई वैरायटीज़ हैं जहाँ पर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और कल जैसे बात हो रही थी कि ऑर्गेनिक राइस भी काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है। आपका दंतेवाड़ा के अंदर जैसे कई राइस की प्रोडक्शन है, तो उसमें काम करा जा सकता है। मैडम ने बताया कि जैसे गल्फ फूड है हमारा, फिर हमारा बायोफैक है, वहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि हम अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन करें। तो हमारा ट्रिया छत्तीसगढ़ है, और भी कई यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं जो कि गल्फ फूड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मैं बैठ के चिट्ठी बना रहा था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि वो लोग गल्फ फूड में तो कर ही रहे हैं बट बायोफैक में भी पार्टिसिपेट करें, तो वही बैठ के मैं चिट्ठी बना रहा था। तो काफ़ी ज़रूरत है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, वहाँ पर जाकर वो देखें कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पर जो इम्पोर्टर्स हैं उनके साथ उनका एक कनेक्ट बनेगा। बाकी हमारे एनसीएल से भी अनुपम जी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताए कि कैसे कोऑपरेटिव्स को लीवरेज करा जा सकता है प्रोडक्शन बेस बढ़ाने में, एक्सपोर्ट्स में बढ़ाने में, और काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है एनसीएल की तरफ से, एनसीओएल की तरफ से एक सप्लाई चेन बन रही है, अच्छा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली बात यही है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक साथ मिलके काम करके काम करना है, सो दैट एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी बने, मतलब आगे एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए। राइस में हमारी स्ट्रेंथ तो है, 30% का शेयर है, तो करीब हमारा
12.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले साल US डॉलर का, बट अगर ओवरऑल मार्केट देखी जाए तो 40 बिलियन की मार्केट है। तो कभी लगता है कि एक बार कहते हैं कि नहीं राइस पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल सिंगल आपका उसी पे फोकस है, बट अभी राइस के अंदर ही देखा जाए तो अभी हमारे पास 30% की मार्केट है, 70% की मार्केट अभी भी बाकी है। और राइस के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी मार्केट जो कि अभी हम यहाँ बिल्कुल भी हमारा प्रेजेंस नहीं है, वो राइस बेस्ड वैल्यू एड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं देख रहा था जो उसमें भी जो आंकड़े हैं कि राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स का 290 बिलियन डॉलर का मार्केट है अगर देखा जाए तो। और हमारा जो एक्सपोर्ट है आप बिलीव नहीं करेंगे कि केवल 100 मिलियन का है। तो 30% हम लोग राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं राइस के, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बल्क राइस के, या चलिए बासमती में ब्रांड्स जा भी रही हैं, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हमारी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है। और जैसा मिस्टर राम ने दिखाया कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। अभी हमारा जो नज़र रहती है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट्स, हम लोग उसी पे ही कंसंट्रेट करते हैं कि चलो पोहा हो गया या फिर आपकी कुकीज़ हो गई। कुकीज़ तो चलिए बाहर भी यूज़ होते हैं, बट बाहर के टेस्ट प्रोफाइल के हिसाब से कई प्रोडक्ट्स हमें डेवलप करने चाहिए। तो सरप्राइजिंग है, हालांकि कई लोगों को पता भी होगा कि आपकी जापान में जो बियर होती है सबसे ज़्यादा राइस की बियर चलती है मतलब। तो उस पर भी काम करा जा सकता है कि कैसे आप लोग, कई स्टार्टअप्स पे काम कर भी रहे हैं हम लोग। कल हमने एक भारतीय इनिशिएटिव भी करा, उसमें करीब हमने 100 स्टार्टअप्स चूज़ करे हैं। तो अगर जो भी राइस पे अच्छे स्टार्टअप्स हैं हम लोग उस पर उनके साथ भी काम करेंगे कि कैसे जो राइस के वैल्यू एड प्रोडक्ट्स हैं उनमें बढ़ावा दिया जा सके। तो कई राइस के क्रैकर्स आते हैं जो कि ग्रीस वगैरह काफ़ी सप्लाई करता है, उसमें काम करा जा सकता है। हमारे राइस के स्नैक्स हैं, जैसे अभी एक हमारी बहुत बड़ी कंपनी है LT फूड्स, उन्होंने कोरियन और जापानीज़ राइस बेस्ड स्नैक्स वो लोग बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और अब उसकी डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छी मांग है। हम लोग फ़्लाइट में आते हैं तो वो मिलते हैं, ये एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। कई आपके राइस की बिरयानी किट्स तो मिल ही रही हैं, बट अब कुछ कंपनीज़ राइस की सिलेंट्रो किट्स भी बनाने लग गई हैं। सिलेंट्रो राइस जो कि अल्टीमेटली जो हमें केटर करना है, नॉर्मली हम लोग बड़ा ही नैरो फोकस करते हैं कि इंडियन डायस्पोरा या ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेस्ट के प्रोडक्ट्स को ही हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट करने में, बट बाहर के जो टेस्ट प्रोफाइल है उसको भी देख के काम करना है। जैसे अभी यहाँ पर भी एक छोटी शुरुआत थी कि जो टेस्टिंग सेशन करा रहे थे वो, तो यहाँ के लोकल अपने राइस से, शायद नगरी दुबराज जी था या जीरा फूल था, उससे वो साउथ अफ्रीकन ब्रेकफास्ट डिश बना के खिला रहे थे मतलब। तो मेरे ख्याल से इस तरह का हमें प्रमोशन करना ज़रूरी है कि बाहर की भी जो डिशेज़ हैं, जो बाहर की टेस्ट प्रोफाइल है, उसको मतलब भी प्रमोट करना है, ताकि जो वहाँ के जो बायर्स हैं उनको भी लगे कि हाँ जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स तो हैं बट एक नई तरह की चीज़ भी बन रही है। तो गल्फ फूड में हम लोग जैसे कर रहे थे, पिछली बार हमने नगरी दुबराज वैरायटी को भी हमने वहाँ प्रमोट करा था। इस बार हमारा एम है कि करीब 10 के करीब जो हमारी GI वैरायटीज़ हैं वहाँ पर उनकी टेस्टिंग हम वहाँ पर कराएंगे। और एक बहुत ही अच्छा अभी हम लोगों का इनिशिएटिव रहा है हमारी राइस इंडस्ट्री के साथ कि हमारा एक नॉन बासमती डेवलपमेंट फंड एक बन गया है। तो उस फंड्स के ज़रिए हम लोग काफ़ी डेलीगेशन विज़िट्स, ट्रेड प्रमोशन इवेंट्स हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो आज के जो राइस समिट में भी अगर कुछ डिलीवरेबल पॉइंट्स आते हैं कि कोई अगर स्टडी करानी है या कोई डेलीगेशन विज़िट कराना है या कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराना है, तो हम लोग उस फंड के ज़रिए, हम लोग छोटा फंड है बट चलिए एक फ़ंड तो है, उससे हम एक डेडिकेटेड वे में हम लोग कुछ रिसर्च करा सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि
राइस सेक्टर में हमारी स्ट्रेंथ तो है, बट जैसे मिस्टर राम ने कहा कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, वी शुड लुक एट द फ्यूचर ऑल्सो। जैसे उन्होंने बोला कि 10 साल में ट्रेसेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, तो ट्रेसेबिलिटी का हमारे पास सिस्टम तो है, ऐसा नहीं कि सिस्टम नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पूरे ट्रेसेबल हैं और कोई ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है करना। वॉल्यूम आते हैं बट हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है जो कि बहुत ही एडवांस सिस्टम है। कई कंट्रीज़ के पास नहीं है इस तरह का ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। तो राइस में भी अगर वॉलंटरी लेवल पे हम लोग ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं, ताकि जो लोग वॉलंटरी लेवल पे ट्रेसेबिलिटी कर रहे हैं उसका ट्रेसेबिलिटी का उनके पास पूरी सप्लाई चेन मैप्ड है, तो हो सकता है जो कुछ बायर्स हैं वो लोग इस तरह के ट्रेसेबल राइस को ज़्यादा वो वैल्यू दे सकते हैं उसकी। तो ये सब तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि अगर चिंतन शिविर से जो हमारे डिस्कशन से आएंगी तो हम उनमें ज़रूर काम करेंगे। और अंत में जैसा मैं कहूँगा कि इस बार ये सेकेंड एडिशन था हमारा छत्तीसगढ़ का जो इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट, और इसमें 6 कंट्रीज से हमारे पास डेलीगेट्स आए, जो एम्बेसडर्स आए, और 12 कंट्रीज से बायर्स आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा ये समिट है और भी आगे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा आज लगा कि सीएम साहब खुद आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें खुद बताया कि कई तरह के वैरायटीज़ हैं यहाँ पर जो कि एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे माइक्रो लेवल इनिशिएटिव्स अगर हम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपीडा पूरी कोशिश करेगा कि जो भी हमारे स्टेट लेवल पे स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ हम काम करके राइस सेक्टर में आगे और भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं और जितना ज़्यादा नए वैल्यू एडिशंस हैं कर सकें, ताकि जो इंडियन राइस है वो एक्सपोर्ट और बढ़ता जाए और जो हमारा ग्लोब में जो शेयर है वो आगे बढ़े। तो राइस जैसे एग्री एक्सपोर्ट्स में भी देखा जाए तो करीब 20% का हिस्सा है हमारा राइस का एक्सपोर्ट्स का, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और एग्री एक्सपोर्ट्स तो हमें बढ़ाने ही हैं, तो एग्री एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ सकते हैं कि जो कि हमारा राइस के एक्सपोर्ट्स हैं बढ़े, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट एग्री सेक्टर में घट रहा है। तो हमें राइस की तरफ से ज़्यादा अभी एफर्ट करना पड़ेगा कि ओवरऑल एग्री एक्सपोर्ट्स इंडिया के बढ़े। तो इन्हीं शब्दों से मैं आज के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं मिस्टर मुकेश जैन IIRS की तरफ से, उन्होंने हमें जो हमारा राइस का चिंतन शिविर है अपने समिट के साथ कराया, बहुत अच्छा है। और अंत में फिर से मैं जो हमारे आज के सारे स्टीम पैनलिस्ट हैं जो कि आज हमारे इस राइस के चिंतन शिविर में आप लोग शामिल हुए, आपका धन्यवाद। और वंस अगेन मिस्टर राम, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ फॉर एक्सेलेंट कवरेज एंड फॉर excellent presentation, and I do hope that the report also will surpass that level. So thank you and best wishes. Thank you so much, Abhishek sir. And और अब हम अपने इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स और जो पैनलिस्ट हैं हमारे, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और मेमेंटो के लिए मैं सम्मानित हमारे मेंबर्स को भी आमंत्रित करूंगा। इस पैनल डिस्कशन में हम 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर फोरम ओपन कर रहे हैं, और अगर कुछ आपके जहन में सवाल हों और आप पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ उठा दें और हमारी टीम माइक लेकर के आपके पास पहुंचेगी एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस। ऑर्गेनाइजिंग टीम प्लीज़ वहाँ पर पहुँचे प्लीज़। 2 रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे, अपना सवाल प्लीज़ संक्षिप्त रखें, अपना नाम बताएं और संक्षिप्त सवाल आप पूछें। हेलो, मैं संजय पाठक हूँ सर।
मैं एक्चुअल में मीडिया पर्सन हूँ। एक छोटा सा सवाल जानना चाह रहा था कि जो एक समीट चल रही है और दूसरा जो एक्सपोर्ट होता है, इससे किसानों को सीधा सीधा लाभ किस तरह से हो सकता है और जो राइस मिलर्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है, ये मुझे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़। अनुपम, कैन यू? किसी भी चीज़ जिसका निर्यात होता है उसका सीधा लाभ एक मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत किसानों तक जाता है, क्योंकि अगर जो निर्यात उसी वस्तु का संभव है जिसमें हम मार्केटेबल सरप्लस यानी कि विपणन योग्य आधिक्य, जितने हमारी घरेलू मांग है उससे अधिक आपूर्ति है, तो उसके लिए एक ही वस्तु संभव है कि हम उसका निर्यात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और अगर वो निर्यात संभव नहीं होगा तो जो हमारी घरेलू मांग से अधिक आपूर्ति है उसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को उसके घटे हुए मूल्य के रूप में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी निर्यात हो रहा है या किसी भी वस्तु का निर्यात होता है उसका सीधा लाभ किसान को मिलता है, लेकिन एक मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत मिलता है, क्योंकि जो भी घरेलू मांग से अधिक वस्तु है उसका एक इस निर्यात श्रृंखला ने भारतीय बाजारों से उसका निर्मूलन किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया और उससे कीमतों में स्थिरता लाई, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला। सर, इसको अमाउंट के रूप में अपन कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ जी, अमाउंट के रूप में कुछ कह सकते हैं क्या सर? देखिए, ये हर एक वस्तु के लिए अलग डायनामिक्स रहेगी कि अगर ये माल जो हम लगभग 20-21 मिलियन टन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये 20-21 मिलियन टन एक्सपोर्ट नहीं हो तो दाम कहाँ तक गिर सकते हैं, ये अर्थशास्त्रियों के लिए या जो एनालिस्ट है उनके लिए एक विषय सही रहेगा कि एक गणना करके बताएं कि अगर ये 17 मिलियन टन जो नॉन बासमती चावल निर्यात करते हैं अगर वो नहीं हो पाए तो उसके परिणाम स्वरूप किसानों को क्या मूल्य मिलेगा, ये एक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के संगणन का विषय है। सर, मेरा पैनल से बैठे राम जी से एक सुझाव है। छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक स्टेट है और हमने माननीय चेयरमैन साहब के माध्यम से कई बार भारत सरकार और राज्य सरकार के दिमाग में लाया है कि ये लॉजिस्टिक सब्सिडी यहाँ पे बहुत ही निहायती आवश्यक है। और जैसे कि आप जानते हैं मोरबी गुजरात में टाइल्स उद्योग को रेलवे द्वारा 50% का किराए में सब्सिडी दिया गया है। तो हम भारत सरकार से ये भी निवेदन किए हैं कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक जो हमारा ड्राई पोर्ट से अगर एक्सपोर्ट करता है कंटेनर के माध्यम से, तो उसमें भी 50% कम से कम छूट मिले तो हम विशाखापट्टनम पोर्ट के जो प्राइसेस हैं उसको हम मैच कर पाएंगे और वर्ल्ड में कम्पिटिटिव और बढ़ पाएंगे, जिससे हमारा प्राइसेस भी अच्छा मिलेगा। तो किसान को इनडायरेक्टली, जो भाई साहब पूछ रहे थे, किसान को प्रॉफिट वैसे मिलेगा। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चेन होता है वो अंत में जो धान खरीदते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम ज़्यादा रेट में धान खरीद पाएंगे। तो सरकार को लॉजिस्टिक्स सब्सिडी के लिए सोचना चाहिए लैंडलॉक स्टेट्स के लिए। माननीय पीयूष गोयल जी ने भी अभी हाल ही में कहा था कि लैंडलॉक स्टेट्स को हम अभी सब्सिडाइज फ्रेट करेंगे और व्यवस्था कराएंगे, पेपर में भी आया था। और अभी जैसे कि मंडी शुल्क छूट दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वैसे ही कुछ व्यवस्था और भी लैंडलॉक स्टेट के लिए, जैसे आप शिपिंग लाइंस, यहाँ पे कनकॉर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ है। आज कनकॉर्ड ने प्राइसेस भी कम कर दिया है, लेकिन आज गाड़ी है लेकिन पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है, वैसा स्थिति है। शिपिंग लाइंस हमारे यहाँ है नहीं। शिपिंग लाइंस के BL पॉइंट्स यहाँ पे खुले और शिपिंग लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एकोमोडेट हो। और जब ये लोग लाते हैं, जब पूरा विशाखापट्टनम, नागपुर कहीं जब कार्गो नहीं मिलता है तो यहाँ ला के रखते हैं। उसके बाद कनकॉर्ड को प्रेशर करेंगे कि हम तो ला दिए हैं, फिर बायर को बुलाएंगे, वो बोले आप ले नहीं रहे हो। तो एक प्रैक्टिकल सोच के हिसाब से देखें, डिमांड सप्लाई के हिसाब से कि कितना रिक्वायरमेंट हमारा, जैसे 1 लाख टन का कैपेसिटी है महीने का चावल का, तो कम से कम 1 लाख टन लिक्विडेट हो पाए, उस मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का यूटिलाइज हो और हमारा छत्तीसगढ़ का वो लाइफलाइन बने।
छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, 7 बॉर्डर स्टेट हैं, उनको भी ये लाभ मिलेगा। जैसे आप वेस्टर्न उड़ीसा का बरगढ़, संबलपुर सारे यहीं से कनेक्टेड हो सकते हैं, अपने झारखंड से हैं, बिहार से हैं, इधर एमपी महाराष्ट्र का कुछ बॉर्डर, सब इसका लाभ ले सकेंगे। और जैसे भारतमाला का अभी रोड चालू होने वाला है, तो और भी ज़्यादा उसमें हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि बीएल पॉइंट यहाँ बहुत अति आवश्यक है। तो ये मेरा आपसे एक सुझाव है कि सर इसको आप आपके रिपोर्ट में इसको एकोमोडेट करें। और माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने काफ़ी कोशिश भी किया है, शिपिंग मंत्रालय को पीयूष गोयल जी ने भी चिट्ठी लिखा है इसके लिए, रेल मंत्रालय को भी पीयूष गोयल जी ने चिट्ठी लिखा है रायपुर एयरपोर्ट के लिए। तो आप कम से कम लॉजिस्टिक की सुविधाएं देंगे तो सारा आज जो जीआई टैग भी हम अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ा भी लेते हैं या उसका वैल्यू एड भी कर लेते हैं, अंत में लॉजिस्टिक के लिए हम मार खाते हैं। तो लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारा आपसे यही निवेदन है, पूरा पैनल में सभी जितने लोग बैठे हैं, लॉजिस्टिक के ऊपर में राजेश भाई भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि खुद निर्यात करते हैं। क्रिप्को एग्री एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जिसका किसानों को लाभ सीधा क्रिप्को देता ही है। तो मैं चाहूँगा राजेश जी भी पहल करें इसके ऊपर में। और कनकोड़ के टीएम साहब भी बैठे हैं, वो यहाँ से पहले भी 20 साल पहले भी यहीं पे थे, आज फिर वापस आए, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन इनको ज़्यादा अच्छी से मालूम है कि यहाँ की क्या चैलेंजेस है। तो मैं पैनल के सामने माननीय जेबी सिंह जी को भी यही बोलना चाहूँगा कि पूरी बात क्लियरिटी के साथ आप राम जी को बताएं, सो दैट छत्तीसगढ़ में सीधा सीधा कार्गो मूव हो और डायरेक्ट यहाँ से पोर्ट से डायरेक्ट ट्रेन जो है पोर्ट कनेक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि फिर आप अपने यार्ड में ले गए, फिर वहाँ से ब्रेकअप किए, फिर वहाँ से, ऐसे में एक्सपोर्ट का मतलब टाइम चैलेंज बहुत बड़ा रहता है और मॉनेटरी लॉस तो होता ही है और टाइम भी जाता है और बायर सेलर के बीच में विवाद भी उत्पन्न होता है लेट। तो इसमें आपसे निवेदन है सर कि इसको लॉजिस्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू सर। मज़े की बात यह है कि चेयरमैन सर आपसे बहुत पास बैठे हैं और आप मेरे को बोल रहे हैं कि चेयरमैन साहब को बताइए क्योंकि आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका रिपोर्ट सीआईएम जाएगा तो मुझे पता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता है वो चीज़ें। Mukesh bhai, let me present to Ramji in this modus. Like the presentation which you have given, आपने जो presentation दिया है, मुकेश भाई का कहना है कि उसके अंदर में लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो हर्डल्स है फॉर द लैंडलॉक स्टेट्स उसको इनकॉर्पोरेट करिएगा, बिकॉज आपका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है दैट इज फैंटाबुलस। साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी अप्रिशिएट किया इसको। तो उसमें एक लॉजिस्टिक्स आई थिंक हम लोग सभी जो नोटिस किया था वो पार्ट मिसिंग था। इफ यू कैन ऐड ऑन दैट विल बी एन वैल्यू एडिशन टू दैट। श्योर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद जेबी सिंह साहब, इनवर्ड इन्वेंट्री की वजह से ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए कनकोड़ का पॉलिसी वैसा है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले से चला आ रहा है। नागपुर हमारे बाजू में है 200 किलोमीटर में और वहाँ 4 ड्राई पोर्ट चलते हैं और रायपुर हम विशाखापट्टनम से लगे हुए हैं। हमारे इंपोर्ट्स आते हैं विशाखापट्टनम में ही डिस्चार्ज होता है और वो अपने उसको यहाँ कॉल कर सकते हैं। वो कॉल यहाँ लेके, आज मार्केट फ्लो है, आज आप अगर बोलेंगे ये आपको फट से बोलेंगे 400 कंटेनर पड़ा है आज ही हमारा, क्योंकि शिपिंग लाइंस जब मंदा होता है तो यहाँ ला के रख देता है। और वो तो डंपिंग की पॉलिसी है, वो तो उसमें तो कोई प्रैक्टिकली अगर इसमें डिमांड सप्लाई होना चाहिए इसमें। सॉरी टू इंटरप्ट। और एक क्वेश्चन मेरा अनुपम जी से भी है सर, आज एक्सपोर्ट आप जो एक्सपोर्ट के यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जो हम चाहते हैं कि बढ़े, उसमें अनुपम जी बहुत हमारा एग्रेसिवली बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज एनसीएल काफ़ी काम कर रहा है निर्यात को लेके। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ओएमएसएस प्राइस अनुपम जी अगर मार्केट लिंक, इंटरनेशनल मार्केट लिंक करा दें डोमेस्टिक के लिए भी, तो कम से कम चावल की उपलब्धता रहेगी मिलर में और निर्यात का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। अन्यथा ये स्टॉक पाइल जो आज चार गुना देख रहे हैं वो 6 गुना हो जाएगा। ओएमएस में जो राइस है वो पीडीएस का राइस है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए नहीं है। ये भारत सरकार का बहुत स्पष्ट सबमिशन सारे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हो चुका है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो मुद्दा किसी भी प्रश्न के लिए खुला है। और ओएमएस का जो मार्केट है वो जो नॉन पीडीएस बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए है। तो मेरा अनुरोध समस्त बाजार मूल्य की जो मूल्य श्रृंखला के जो सदस्य उनसे ये है
कि ओएमएस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भावों से लिंक करने का आग्रह छोड़ दें? सर, इससे पहले फूड सिक्योरिटी के नाम से 20% ड्यूटी लगाया गया, निर्यात को बंद किया गया। आज हमारे पास सफिशिएंट अनाज है, हम दुनिया को खिला सकते हैं 4 साल तक बैठकर। तो इसको क्यों ना लिक्विडेट, किस तरीके से एक्सपोर्टर उसका बेनिफिट लेगा, वो तो सर आपके माध्यम से ही हम कोऑपरेटिव मंत्रालय में पहुंचा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें। हमारे छोटे छोटे एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, एमएसएमई मिलर्स सब बैठे हैं सर। आपके जैसे विद्वान आदमी रहेंगे तो सर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का चावल और ज़्यादा लिक्विडेट होगा। आई थिंक उन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया है कि ये मुद्दा छोड़ दीजिए आप। सो लेट्स मूव ऑन। आपसे राम जी, आपसे निवेदन है, इसको रिपोर्ट में अकोमोडेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज छत्तीसगढ़ 150 लाख टन धान सरकार खरीद रही है, एफसीआई के पास जगह नहीं है, स्वयं स्टेट गवर्नमेंट के पास जगह नहीं, इंडिया में कहीं जगह नहीं है एफसीआई के पास। हर मिलर के पास आज धान पड़े हुए हैं, चावल का जगह रखने को है नहीं, मिलर बंद पड़े, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज हमारे यहाँ 3,500 राइस मिल है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि वो उस पर कुछ विचार करें और छोटे छोटे उद्योग को सपोर्ट करें उसमें। श्योर जोक्स अपार्ट, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस। आप अपना लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस हमें दीजिए, जो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन हो रहा है वो पॉइंट्स हम नोट कर ही रहे हैं। इट विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ द पोस्ट इवेंट रिपोर्ट, सो टू से वी विल कैप्चर ऑल दीज पॉइंट्स मोस्ट सर्टेनली। Thank you, sir. There is one more question, but we are running out of time. Should we wrap up? We can read it offline. Yeah, we can take that offline. जो दूसरे हैं. Let's. थैंक यू सो मच। और अब हम अपने एमिनेंट पैनलिस्ट को मेमेंटो देना चाहते हैं और इसके लिए एसोसिएशन के मेंबर्स को हम इनवाइट करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि एक बहुत ही शानदार और एक बेहतरीन सत्र यहाँ पर पैनल डिस्कशन में आयोजित हुआ और सभी पैनलिस्ट को इसके लिए हम थैंक यू कहते हैं। अनिल जी, मुकेश जी, अमित भैया, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मंच के पास आ जाएं। और मेमेंटो स्मृति चिन्ह की शुरुआत हम कर रहे हैं। विनीता मैम को ही स्मृति चिन्ह देंगे। श्रेया जी को हम आमंत्रित करते हैं और श्रेया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विनीता मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा। थैंक यू सो मच। अनिल जी को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच पर आप आएँ। और डॉक्टर एस ज्ञान संबंधन जी को आप स्मृति चिन्ह दें। अमित अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं और आप आएँ। श्री अनुपम कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEL, आप अनुपम कौशिक जी को स्मृति चिन्ह देंगे। अमित अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट है आप आएँ। रोहित शर्मा जी हमारे बीच हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। JB सिंह साहब, चीफ मैनेजर हमारे बीच हैं कॉनकोर की ओर से। हम JB सिंह साहब को स्मृति चिन्ह देने के लिए रोहित जी को आमंत्रित करते हैं। आशु अग्रवाल जी हैं, हम आशु जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। थैंक यू। आशु अग्रवाल जी से निवेदन है कि डॉक्टर सौरभ बदोनी जी हमारे बीच हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह देंगे। डॉक्टर सौरभ जी को आशु अग्रवाल।
अनिल जी से हम पुनः निवेदन करते हैं, अनिल अग्रवाल जी से, कि हमारे बीच में राजेश पहाड़िया जी हैं, चीफ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। आप राजेश पहाड़िया जी को स्मृति चिन्ह देंगे। अनिल अग्रवाल जी। अमित जी को हम पुनः, अमित अग्रवाल जी को मंच पर बुलाते हैं और ये पूरा सेशन जिन्होंने मॉडरेट किया और एक बेहतरीन सेशन हमारे बीच में ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मिस्टर रामकृष्णन एमडी मेसर्स प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, रामकृष्णन सर को आप स्मृति चिन्ह देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक मॉडरेटर की, और जब भी पैनलिस्ट में सारे दिग्गज लोग बैठे हों और उसे एक सही डायरेक्शन में ले जाना और समय पर इसे संचालित करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी पैनलिस्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इनपुट दिए हैं। सभी पैनलिस्ट के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया सभी पैनलिस्ट सामने आ जाएं, आपके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ। चेयरमैन सर, अभिषेक सर, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया आप भी मंच पर आएं। मुकेश जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। मुकेश जैन जी से निवेदन है आप स्टेज पर आएं। चेयरमैन अपीडा अभिषेक सर से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया अभिषेक सर भी ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतन शिविर इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स, इस विषय पर बहुत ही शानदार यहाँ पर बातचीत हुई है। और हमें आप सभी को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब से कुछ देर में हमारे बीच रायपुर लोकसभा के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। 3 बजे उनके आगमन की सूचना है। साथ ही सभी जो हमारे गेस्ट हैं उन सब से अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे वे सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अगले सेशन के लिए, अगले डिस्कशन सेशन जिस तरीके से लाइन अप हुए हैं हम उसके लिए स्टेज की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो जो हमारी टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले सेशन के लिए स्टेज प्रिपरेशन ज़रूर कर दें। ऑर्गेनाइजिंग टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी प्लीज़ स्टेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। हमारे बीच में
Hello, check. Thank you so much. May we request to all the guests जो जिनका लंच हो चुका है वो भी आ जाएं और कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। हम अपने स्केड्यूल से हमारी टाइमिंग थोड़ी सी बदली हुई है और हम चाहते हैं कि हम समय सीमा में अपने जो प्रोग्राम्स हैं, जितने सेशंस हैं, उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और जितने भी गेस्ट हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप सभी सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। ऑर्गेनाइजिंग टीम और एसोसिएशन के मेंबर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप सभी गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि वे सभी आकर के इस हॉल में